44-42. Maharashtra, you're talking about Maharashtra. Maharashtra men, na? Maharashtra Gujarat 28-26. Now invite 28-26. And Delhi West Bengal was, yeah, Delhi West Bengal was 32-28. Amrut Bhai Patel ji, who is the trustee of Sanskar Gram. Welcome Shri Understanding ji, who is General Secretary, KHO Federation of India. I request Shri Upkar Singh Virk ji, please escort both guests. Shri Amrut Bhai Patel ji, who is the trustee of Sanskar Gram, and Mr. Ramesh Tyagi, who is the General Secretary of KHO Federation of India. Upkar Singh Virk is escorting of them. शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे So the play is about to begin and the toss is being done. And both the teams are being introduced. Now they are going back and the play will resume very soon. This is going to be a close contest between Maharashtra and Delhi because the first contest was that ended in a nail-biting finish, Maharashtra winning the match. Of course, it was not a nail-biting finish. So far as points are concerned, it is okay, 28 points, 26. But Maharashtra won the match, spanning 6.10 minutes, so it was a comprehensive victory so far as Maharashtra is concerned, and they have started the journey of success right from the word go. And today they are going to play against Delhi. The festive mood is
there, and all the spectators and players from all over are enjoying this through the live coverage by DD Sports. And we are at Sanskar Dham Sports Complex for the KHO event being organized here. Today is the second day of this event, and as per the format of the game, there are two groups so far as main category is concerned, and in each group there are 4 teams, and so is the case with women category as well. So the play is about to begin between Delhi and Maharashtra. Maharashtra is a champion and is known to be the mother of KHO, but at the same time Delhi and other states are also doing exceedingly well with professional approach, appointing professional coaches, and at the moment we see the players are loitering on the court and they must be giving the final touch to the strategy. They must have planned in the hotel rather, and today they are going to, it will be very interesting to see that how they execute the plan. Of course planning is okay, but execution is more important. And Delhi is chasing, so we will see any moment 3 defenders from Maharashtra, and normally as we have seen that they will be the best defenders. Anil. Well, exactly. It's a good morning, Praful Vaidya. It's going to be an interesting day 2 of action there at the 36 National Games. We have Delhi taking on Maharashtra, 2 teams with contrasting fortunes there in this particular edition of the National Games. Maharashtra off to a great win in that opening encounter. Delhi unable to open their account against West Bengal, so there will be pressure on the team from Delhi. So clearly it's a good contest that we can see on the cards between the 2 sides there. Maharashtra having the upper hand in the group, having won the opening encounter, will be looking bursting with full power and vigor in this encounter to make it 2 wins out of 2 wins in the 2 matches that they have played. So off to a great start there, the match between Delhi and Maharashtra. Delhi, the attackers, while Maharashtra, the defenders. The first batch of 3 defenders for Delhi there, for Maharashtra there in the middle, while Delhi trying to make trying to get a good start in the opening encounter. So 3 defenders are jersey number 6, 7 and 11, and this is going to be the best batch, it seems, because normally the best defenders are sent. Well, Praful, they have got their captain there in the middle, Rishikesh there leading from the front, number 7, Maharashtra's captain and Maharashtra's ace number 1. He's there, he's going to be there, leading this particular squad. But the players there in the middle, number 6, number 11 and number 1, that's Rahul, number 6 is Ramji and number 11 is Pratik. The 3 players there in the middle, but their captain there saving himself for the, I think in the 2nd or 3rd batch, and that's going to be important for Maharashtra, especially in this crucial encounter against Delhi. Basically, the first batch will decide the course of the match, because how much time do they consume on the court, that's going to be very, very interesting. Delhi will definitely try to see to it that they can claim 1 or 2 early points at least, so that they can get some momentum. But at the moment it's not happening. Number 11 is being chased, and he is playing in double chain, and he is running exceedingly well, and of course the speed is important, but at the same time it has to be controlled speed, and that's being exhibited by both the teams on the field. Delhi is desperately trying, but they are committing fouls, and that is a disadvantage. Now I think they are clubbed out. They will have to change the court. In number 11 and number 6 were in the same court at the moment. There was a slight fumble for them, but anyhow they managed to change the position very easily, and so now 3 defenders are there, and that's going to, no, it was touch and go, and this time I think he has succeeded. Let us wait for umpire's signal. Yes, they have claimed the point. Well, exactly, Delhi getting off to inside 3 minutes of action. Delhi's managed to capture 4, or rather get 2 defenders from Maharashtra back there. So that's a great start that Delhi's managed to get. Can they consolidate is what we are looking at. Still the first batch of defenders
Number 6 very much there in the middle. Ramji Kashyap, holding things for Maharashtra. The first batch of defenders that are there in the middle. Delhi still looking to make amends there, trying to get the first set of defenders back there. And Delhi still now, trying something different purely in terms of strategy. But referee's call once again, indicating that there was a foul in the way the players had swapped or the players had done KHO, as a result of which things once again back on the floor, and Delhi trying to make a quick jump over. So far as Ramji Kashyap is concerned, he has proved to be an icon for Kho players, and that we have seen in that ultimate game, ultimate Kho also. And he is, habituated to have some dream runs, and that is being exhibited. We are 5 minutes and 21 seconds are left, and still their first batch is not in the sitting place. And he is giving some torrid time. This is what we are talking about, because if anybody from the first batch consume maximum time, it becomes easier for the defending side to do it. And he is planning the strategy, he is executing it, and he knows where to move, how to move, and from which chain to operate. Now, my God, that's going to be very crucial. Ultimately, he has fallen down and paid the penalty for that. And so at the moment, the first batch is back and the position is 6. Delhi has managed to score 6 points, and still 4.33 seconds are left. 4 minutes and 30 seconds are left, and Delhi has managed to get rid of the first batch. So once again, it's going to be a tough job so far as the chasers are concerned, and particularly looking at the potential and performance of Maharashtra team, Anil. Well, exactly. The second batch of defenders there, number 5 Akshay, number 8 Suyash, and number 12 is Lakshman. All three will be trying to now hold fort and not give any more opportunities for Delhi. Remember, 4 minutes of action still left. 240 सेकंड अभी बचे हैं इस मुकाबले में। पहले राउंड में जब दिल्ली अटैक कर रही है, और दिल्ली अब तक कमाल कुछ कर नहीं पाई है, और दिल्ली ने अब तक 8 अंक बटोरे हैं, यानी 4 डिफेंडर्स को दिल्ली ने आउट किया है। लेकिन दिल्ली की कोशिश एक के बाद एक लगातार रेड कर इस मुकाबले में वापसी करने की, लेकिन महाराष्ट्र जैसी टीम के सामने इस तरह का खेल दिखाना मुश्किल ही नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा कठिन, लेकिन दिल्ली पुरचोर कोशिश करती हुई यहाँ इस मुकाबले में वापसी करने के लिए। And Delhi player is claiming, and number 5 is shooting, but it is umpire's decision and he has to go. So 2 more points and the score goes to 10. So 5 of the first defenders are back. And now number 8, Suraj. Yes. नंबर 8 के खिलाड़ी यहाँ दूसरे बैच के डिफेंडर्स जो महाराष्ट्र के हैं, वो पूरी तरह से मैरी गो राउंड या फिर रन एंड चेस का पूरा मजा यहाँ दिल्ली के खिलाड़ियों को देते हुए, लेकिन दिल्ली के खिलाड़ी भी पूरी तरह से कोशिश करते हुए किसी तरह उसे पकड़ने की, लेकिन अब तक हाथ नहीं लग रहा, और कोशिश यही दिल्ली के खिलाड़ियों द्वारा कि किसी तरह से इसे आउट कर 12 अंक बटोर कर सके। हर खिलाड़ी के आउट होने पर दिल्ली की टीम को 2 अंक मिलते हैं। इसका मतलब 5 खिलाड़ी अब तक आउट करने में कामयाब रहे हैं और सिर्फ 10 अंक दिल्ली के पास। And so far as the plus point of Maharashtra is concerned, that it is a very balanced team, nice combination, and most of the players have represented in league also. So that speaks about their performance and potential. But at the moment, it is number 8. Once he is giving some tough fight, or rather some anxious moments for Delhi chasers. My God, yes, that's it. Once again, commentators' curve starts. And so now the position is 12. 1 minute and 44 seconds left. Now the new batch is there. Number 10, Akshay. Number 10 is Akshay. But at the moment he is enjoying some leisure time. And number 1, Rahul.
बिल्कुल तीसरे बैच के जो डिफेंडर्स आए हैं, 3 डिफेंडर्स, नंबर 10 अक्षय, नंबर 2 सागर और नंबर 1 राहुल। 3 खिलाड़ी मैदान के बीच में। दिल्ली के पास 12 अंक की बढ़त। दिल्ली 1 मिनट का खेल शेष। दिल्ली को यहां 2 और खिलाड़ियों का आउट करना दिल्ली के लिए जरूरी, क्योंकि दिल्ली के पास सिर्फ 50 सेकंड का खेल बचा है। जो कमाल करना है अगले 50 सेकंड में दिल्ली को करना होगा, क्योंकि इस मुकाबले में 12 अंक मेरे हिसाब से सेफ क्वेश्चन नहीं होता है प्रफुल्ल, अगर इस मुकाबले को निकालना है तो। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा टफ भी तो जरूर रहेगा। और यहाँ हम बात करते थे कि नॉर्मली first batch and second batch are more powerful in defending, but so far as Maharashtra is concerned, I think that they can send the last batch as the first batch also in that case. They are equally competent to defend. And see number 1 as if he is playing the number 1 of the first batch, it seems. बिल्कुल 10 सेकंड का खेल बचता हुआ। दिल्ली के पास 12 अंक मेरे हिसाब से महाराष्ट्र जैसी टीम के सामने कुशन नहीं है, लेकिन समय समाप्त होता हुआ और ये लॉन्ग हूटर रेफरी का। So Delhi has managed to score 12 points.
बिल्कुल दिल्ली के लिए पहले राउंड में जो 3 डिफेंडर्स आए हैं वो है मदन नंबर 3 जर्सी पहने हुए, ऋतिक नंबर 7 और विशाल नंबर 8, 3 खिलाड़ी जो पहले राउंड ऑफ डिफेंडर्स के रूप में आए हैं। महाराष्ट्र ने जिस फुर्ती के साथ शुरुआत की है, महाराष्ट्र ने अपने इंडिकेशन साफ किए और मेरे हिसाब से महाराष्ट्र की कोशिश यही होगी कि सीधा प्रेशर बना सके और दिल्ली को बैकफुट पे डाले, लेकिन अभी भी मौका नहीं हाथ लगता हुआ। 2 बड़े जंप और पहला कैप्चर, 2 पॉइंट। महाराष्ट्र ने अपना खाता खोला है। सिर्फ 30 सेकंड का खेल हमें देखने को मिला और महाराष्ट्र ने 2 पॉइंट हासिल कर लिए है। तो इंडिकेशन बड़ा क्लियर है कि महाराष्ट्र मौके नहीं गवाएगा और कोशिश यही करेगा कि जल्द से जल्द दिल्ली के खिलाड़ी या फिर जो 12 पॉइंट का क्वेश्चन दिल्ली ने बनाया उसको जल्द से जल्द वो खत्म करके लीड लेने की कोशिश महाराष्ट्र की होगी। महाराष्ट्र ने जिस अंदाज से इस प्रतियोगिता में शुरुआत की है, पहला मुकाबला जीतने के बाद महाराष्ट्र को अगर आज की मुकाबला महाराष्ट्र जीतने में कामयाब रहती है तो एक तरह से महाराष्ट्र नॉकआउट स्टेज के लिए अपने स्थान को सुनिश्चित कर लेगा। तो ऐसे में महाराष्ट्र की कोशिश आज इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल की अपनी राह या फिर नॉकआउट स्टेज की अपनी राह को पक्की करने की होगी। लेकिन दिल्ली भी यहाँ किसी से कम नहीं। दिल्ली की कोशिश यही कि मुकाबले में बने रहे, लेकिन इसी समय दूसरा खिलाड़ी, दूसरा डिफेंडर दिल्ली का नंबर 7 आउट होते हुए 4 अंक महाराष्ट्र के पास, 12 अंक दिल्ली के पास। और अब भी पहले डिफेंडर्स जो पहले राउंड के डिफेंडर्स है या फिर पहला बैच ऑफ डिफेंडर्स, उन्होंने अच्छी तरह से दिल्ली की कमान संभाली है और दिल्ली को अब तक इस मुकाबले में बनाए रखे हुए हैं। लगभग 7 मिनट 20 सेकंड का खेल बचा हुआ इस मुकाबले में और पहले इनिंग्स में 7 मिनट 20 सेकंड का खेल बचा हुआ और तीनों ही डिफेंडर्स आउट, यानी 2 मिनट, लगभग 2 मिनट के अंदर दिल्ली के दोनों ही पहले बैच के सारे डिफेंडर्स आउट हो चुके हैं और दिल्ली की टीम पूरी तरह से दबाव में। आपकी बात बिल्कुल सही है अनिल, जैसे भी देखते हैं कि फर्स्ट बैच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन इस मामले में हमने देखा कि महाराष्ट्र के चेजर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके अपने कौतक का परिचय दिया और ये इस टाइम पर जो दिल्ली के जो सेकंड बैच है उनके लिए बड़ी जिम्मेवारी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाले, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होने वाला है। और ये वंस अगेन आट्या पाट्या का गेम हुआ और एक और चेज डिफेंडर को जाना पड़ेगा। द स्कोर इज 12 एंड दिस इज द सेकंड बैच ऑफ दिल्ली एंड एट द मोमेंट द स्कोर इज 12। द महाराष्ट्र प्लेयर, महाराष्ट्र डिफेंडर बिल्कुल प्रेशर में है दिल्ली की टीम। दिल्ली के दूसरे बैच के डिफेंडर्स नंबर 5 मनीष, नंबर 10 सत्यन और नंबर 14 मोहम्मद मिराजुल। इसमें सिर्फ मोहम्मद मिराजुल अभी बचे हैं और मेरे हिसाब से दिल्ली के पास बहुत समय है इस मुकाबले में। दिल्ली एक कंफर्ट जोन में है, महाराष्ट्र एक कंफर्ट जोन में है इस मुकाबले में, क्योंकि अब भी करीब 6 मिनट का खेल बचा हुआ है और अब मेरे हिसाब से अंकों की बराबरी 12-12 की बराबरी, इसका मतलब महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा लीड निकालेगा और 7 खिलाड़ी महाराष्ट्र ने लीड बना ली है। 14 अंक महाराष्ट्र के, 12 अंक दिल्ली के। मेरे हिसाब से एक इनिंग विंस की ओर महाराष्ट्र बढ़ती हुई। और अभी तो 5 मिनट और 34 सेकंड का खेल बाकी है और अब तक लीड बना ली है। 2 रन की और लीड ज़्यादा हो गई और ये स्कोर हो गया 16 पॉइंट। जैसे कि महाराष्ट्र ने डिफेंड करते हुए बहुत अच्छा किया था, वैसा ही वो चेजिंग में भी कर रहे हैं और यही उनका कॉम्बिनेशन बताता है। तो अभी तो स्कोर हो गया है 20 and they are going exceedingly well and they are accelerating the moment of claiming the points and they have succeeded so far, and it's going to be a tough job for the Delhi team to defend the score whatever is put against them. So at the moment the score is 20-12 and they have got already lead, and on the field some excitement movement is there, and that's going to be one more victim so far as Delhi is concerned. Now Delhi number 8, Delhi defender number 8 is desperately trying to protect himself from an attack, and the score is 22-12. Very interesting KHO is being displayed, particularly by Maharashtra. They are playing according to the plan. They are playing according to the rules of the game, and they are performing. And why not?
They are seasoned campaigners. There are some of the players who have represented in leagues also. And so far as this national games are concerned and the KHO teams are concerned, most of the players have represented at national level or are the awardees, because in KHO also now awards are being given. And as we have been talking earlier, yesterday only, Sudhir Parab of Baroda was the first Arjuni awardee, and the last one was Sarita Kale from Maharashtra. It's over to Anil. वेल बिल्कुल उसी तरह का दबाव, मतलब लगभग यहाँ जिस अंदाज में दिल्ली खेल रही है, मेरे हिसाब से बैकफुट पे महाराष्ट्र ने पूरी तरह से इस मुकाबले में अपनी पकड़ बनाई है, क्योंकि अब भी लगभग 3.5 मिनट का खेल बचा हुआ, यानी लगभग 210 सेकंड अभी भी दिल्ली के महाराष्ट्र के पास इस मुकाबले में और अंक बटोरने के लिए। और दिल्ली पूरी तरह से बैकफुट पे है, क्योंकि दिल्ली के पास है 12 अंक, महाराष्ट्र ने बनाए 26 अंक और 3 मिनट का खेल बचता हुआ। ऐसे में जो महाराष्ट्र का, मैं कहूँगा दिल्ली की पूरी टीम 2 बार ना आउट हो जाए पूरे 2-3 मैचेस जो है, प्रफुल्ल ऐसा लग रहा है कि प्रेशर दिल्ली पे बहुत ज़्यादा, और दिल्ली इस प्रेशर में महाराष्ट्र के सामने कुछ कमाल नहीं कर पा रही। और ये अक्सर हम देखते हैं कि जब किसी भी टीम महाराष्ट्र के सामने आती है तो थोड़ी उनकी बॉडी लैंग्वेज शुरू से ही दबी हुई रहती है, लेकिन और ऐसा कभी कभी नहीं भी होता, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता ही रहता है, because of the potential and the performance and the exhibition on the field, that they have proved that they are superior. And not only that, but they are champions of last national games also, and that shows their caliber. And even at international also, when the Indian team is selected, you find so many players from Maharashtra in that team also. बिल्कुल, जिस अंदाज में महाराष्ट्र यहाँ खेल रही है चैंपियन टीम का, उनमें हुनर, उनमें काबिलियत दिखती है, और वही काबिलियत स्कोर कार्ड पर भी एक तरह झलकता हुआ। 28 पॉइंट महाराष्ट्र के, लगभग 2 मिनट का खेल शेष, 120 सेकंड, मैं कहूँगा 32 या 34 पर महाराष्ट्र की टीम जाकर रुक सकती है इस मुकाबले में, क्योंकि आखिरी 2 मिनट पल्सेटिंग होता है। आखिरी 2 मिनट में जिस तरह से खिलाड़ी अपना फुल स्ट्रेंथ के साथ या फिर फुल थ्रोटल, फुल तेजी के साथ खेलते हैं, ऐसे में दिल्ली की टीम पूरी तरह से बैकफुट पे, पूरी तरह से दबाव में होगी। सिर्फ 1 मिनट 45 सेकंड का खेल बचता हुआ इस मुकाबले में, पहले राउंड में या फिर पहले इनिंग्स में, लेकिन जो बढ़त महाराष्ट्र ने बनाई है वो बढ़त को मेरे हिसाब से दिल्ली के लिए बहुत भारी होगा दूसरी पारी में या दूसरी इनिंग्स में कमबैक करने के लिए। महाराष्ट्र ने जिस तरह से अपना वर्चस्व, जिस तरह से अपनी बढ़त बनाई है, 28 पॉइंट, इसका मतलब पूरी तरह से हावी हो चुकी है महाराष्ट्र की टीम दिल्ली पर। क्या एक इनिंग्स विन की ओर हम जा रहे हैं, ये जानते हैं वैद्य जी के साथ। चांसेस तो पूरे हैं वैसे कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री का, एंड डेफिनेटली दे विल विन, इट सीम्स, बिकॉज miracles don't happen frequently, and particularly so far as the game of KHO is concerned, I mean, once you establish yourself and once you prove yourself on the field, and when you are having the strategy and implementation of planning, it's very easy for you to claim points and achieve success, and that is being done so far as Maharashtra is concerned. At the moment the score is 32-12, the difference of 20 points, and it seems that the points are raining for Maharashtra. Of course the rainy season has gone, but so far as points are concerned and so far as Maharashtra is concerned, points are raining for them. Anil, बिल्कुल, मैं जिसकी हम बात कर रहे थे प्रफुल्ल, वही लगता हुआ पूरी पारी 2 बार आउट होगी मेरे हिसाब से। 3 बैच ऑफ डिफेंडर्स होते हैं और ये हो गया 36 अंक, यानी मेरे हिसाब से पूरी टीम, दिल्ली की पूरी टीम, 9 खिलाड़ी 2 बार आउट हो चुके हैं, और महाराष्ट्र अभी भी समाप्त नहीं हुआ। महाराष्ट्र के पास 2 सेकंड का खेल बचता हुआ, और यहाँ पहले इनिंग की समाप्ति पर महाराष्ट्र के पास 36 अंक, दिल्ली के पास सिर्फ 12, और दिल्ली के लिए यहाँ से कमबैक करना मुश्किल ही नहीं। लेकिन खेल की यही खूबी है, खेल में हमें कमबैक कभी रूल आउट नहीं करना चाहिए। उम्मीद यही करेंगे कि दिल्ली के कोच दिनेश राणा क्या स्ट्रैटेजी लेकर दूसरे इनिंग्स में उतरते हैं, इसको देखना रोचक होगा।
6, Ramji Kashyap played 120 seconds. Number 1, Rahul Mandal played 150 seconds, he will not out. Number 4, Nivin Kurte scored 10 points. Number 14, Nihal Duble scored 8 points. On the other side, number 10, Rajvir played 1 minute. Number 2, Gaurav scored 4 points. And after Maharashtra 36, Delhi 12. Maharashtra will got 24 points. बिल्कुल 9 मिनट का खेल, दूसरी पारी की शुरुआत। महाराष्ट्र के नंबर 6, नंबर 15 और नंबर 13 के खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी, जो इसका मतलब महाराष्ट्र ने अपने बेंच स्ट्रेंथ को यहाँ आजमाने की कोशिश की है इस मुकाबले में। जो पहले इनिंग्स में जो खिलाड़ी उनके पहले 3 बैचेस में आए थे वो ये खिलाड़ी नहीं है। इसका मतलब महाराष्ट्र की कोशिश यहाँ हमने बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करने की, और इस मुकाबले में क्योंकि जिस तरह की बढ़त महाराष्ट्र ने बनाई है तो महाराष्ट्र के पास पूरा एडवांटेज है, और महाराष्ट्र समझती है कि इस मुकाबले में दिल्ली की वापसी मुश्किल है, और ऐसे में इस मुश्किल घड़ी में महाराष्ट्र की टीम अपने जो बाकी खिलाड़ी हैं जिनको टूर्नामेंट में या फिर प्रतियोगिता की शुरुआत में उन्हें इस नेशनल 36वें नेशनल खेलों में उन्हें खेलने का मौका दे रही है, ये साफ दर्शाता है टीम के कोच की जो कॉन्फिडेंस है इन खिलाड़ियों में और इनके टैलेंट पर। नंबर 15, नंबर 6 और नंबर 13। नंबर 15 विजय, number 6 as usual Ramji, and number 13 Dheeraj are there as defenders, and the immediate target so far as Delhi is concerned would be to score 24 points in order to give some chance to claim some points from the opponents. But that's going to be, in that case, they will have to claim 8 defenders, which is going to be a tough job for them. But at the moment, we are back to the game. The first match is there. A ring change is being implemented. Number 13 is being attacked at the moment. 10 is going to be out. Let's wait and watch. So that's the first victim so far as Delhi is concerned. They have done a good job this time by claiming the first point. That is, they have managed to score 2 points in that case. But there is a long way to go for them in order to come back into the game. And looking to the potential of Maharashtra defenders, it won't be easy. It will be very interesting to see how many points can they garner, particularly against Maharashtra. But at the moment, it's not very exciting KHO. But of course they are running, but not much excitement is prevailing. More excitement is prevalent off the field rather than on the field. Of course, there must be excitement within, but they are not expressing it because they know that there is no need to get excited, particularly where you are on the field. But when there is a touch and go, they definitely try to pressurize the umpires as well. But they are professionals and they are not in a position to do anything like that. So, but at the moment we are back to the game. The score is just still stationary at 4, and just 6 minutes and 10 seconds are left so far as this turn is concerned. And as you know, in each turn, the defenders and chasers play 9 minutes each, and there are 2 innings. That is, in all, it is a 36 minutes and counter rather on the field. And of course there is some interval also, because after first turn there is an interval of 3 minutes break, and between the innings there will be 6 minutes break. But now we are back to the game because there is not much progress so far as the points are concerned, and Delhi is desperately trying to get rid of this gentleman number 6 who is Ramji Kashyap, and it has been a tourist task throughout, even the ultimate KHO also, to get rid of him, because there are maximum dream runs in his name in that case. And dream runs means when you are at the court for a longer time, there are some bonus points, but of course the rules are not applicable here, particularly in this national game. And he was the hero of that ultimate one. Here also it's going to be the same
predict its seems, and he is giving some toric time. Now he is changing the change. He is playing in ring. And so far as the speed is concerned, he knows when to accelerate and when to stop. And at the same time, he is giving some. Of course, we have not seen due turns so far as Ramji Kashyap is concerned, because he doesn't require to do that. He leisurely avoid the tapping or trapping or whatever it is. So he is jumping and he is excited. Why not? He has done an exceedingly job for his team, and the point is being, play is being made. So ultimately he has gone, but just 4.12 seconds left and the score is still 6. So the first match is back into the dugout rather, and the next match is there. That is number 10, number 2. Now number 2 is being chased and he is playing in chain, double chain rather, because when you play and double chain, you get some relaxation, you get some breather time. And particularly we have seen that so far as single chain is concerned, female normally play in single chain, while these professional KHO players prefer to play in double chain. They normally avoid running between the poles because that's not easy. And not only that, but they avoid a pole also. They avoid going to the pole also, because the pole is a place where the chaser gets maximum opportunity to get rid of the defender, because he can cross the central lane. He can cross the central lane with the movement of his leg, and he can have an opportunity to tap. But at the moment that is not being exhibited. At the moment the score is just 6, and it's going to be a torrid time so far as Delhi think tank is concerned and so far as the Delhi chasers are concerned. Anil. बिल्कुल दिल्ली के लिए करो या मरो स्थिति है, क्योंकि दिल्ली यहाँ पहला मुकाबला हारने के बाद दिल्ली की टीम पूरी तरह से दबाव में है और इस मुकाबले में भी दिल्ली कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर पाती। इसके कारणवश दिल्ली की टीम और दिल्ली के कोच दोनों ही दबाव में हो गए। लेकिन दिल्ली की खिलाड़ियों की कोशिश यही है कि महाराष्ट्र जैसी टीम जो पिछले राष्ट्रीय खेल 35वें राष्ट्रीय खेल का गत विजेता या फिर डिफेंडिंग चैंपियन टीम है महाराष्ट्र की टीम, और महाराष्ट्र टीम की यही कोशिश होगी कि वो अपने वर्चस्व को यहाँ बनाए रखे, अपने जीत के सिलसिले को यहाँ बरकरार रखे। और दिल्ली की टीम के पास अब समय नहीं है। दिल्ली की टीम के पास अभी भी 16 अंक दिल्ली की टीम पीछे है दूसरे इनिंग्स में, और दिल्ली की टीम ने अब तक कोई ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए हैं। और दिल्ली की टीम पूरी तरह से कोशिश यही कर रहे होंगे कि किसी तरह से इस मुकाबले में लगभग यहाँ 120 सेकंड का खेल बचता हुआ दिल्ली के पास, और दिल्ली के पास ओवरकम या फिर डेफिसिट या फिर कमी को पूरा करने के लिए अब भी 16 अंकों की जरूरत। तो ऐसे में बहुत कुछ नहीं है दिल्ली के पास इस मुकाबले में वापसी करने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र की टीम जिसे कहते हैं कि इस खेल के वो हीरोज है, इस खेल के वो चैंपियंस है, और वो एक बार फिर दिखाते हुए उन्हें इस पदवी के हकदार वो क्यों हैं जिस तरह से उन्होंने खेल दिखाया है मैदान में। आपकी बात बिल्कुल सही है अनिल। जैसे कि हमने कल भी बात की थी, जैसे कि चाइना में बच्चा 2 या 3 साल का होता है तब से उनको स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग दिया जाता है, पर्टिकुलरली वो फेंसिंग है या वुसू है, मार्शल आर्ट्स है, ऑल दिस थिंग। एंड सो फार एज महाराष्ट्र इज कंसर्न्ड, द सेम थिंग इज बीइंग रिपीटेड so far as the Kho and Kabaddi are concerned. Of course, Kabaddi not that much, but so far as Kho is concerned, even kids of 2-3 years are playing, and we have seen them playing at their ground or at their home along with the players, along with the national players, and they have been practicing. And yesterday only I saw one photograph on Facebook that one of the senior player, Kho player, was giving training to that kid who was just 6 years old. So that is the nursery. That is the nursery of Kho. So far as Maharashtra is concerned, it is a nursery of Kho, and that product we are seeing in this national games also. At the moment, Delhi must be happy that they have entered into double figure at least. The score is 10. But there is a long way to go, and it is anybody's guess that Maharashtra is going to win this match comprehensively. बिल्कुल जिस तरह का खेल 12 सेकंड का खेल बचता हुआ और दिल्ली के पास कोई मौका नहीं, अभी भी महाराष्ट्र के पास 14 अंकों की बढ़त। यहाँ
लॉन्ग हुटर का इंतजार रेफरी का, जो किसी भी समय बजेगा, और बच गया। और एक तरह से महाराष्ट्र की जीत निश्चित करती हुई महाराष्ट्र खो खो के खेल में, इसे महाराष्ट्र को शिशु मंदिर कहा जाता है, जहां से खिलाड़ी एक के बाद एक बचपन से ही इस खेल का आनंद या फिर इसे मजे के रूप में खेलता है, और उसका साफ हमें टैलेंट यहाँ देखने को मिलता हुआ एक के बाद एक महाराष्ट्र के खिलाड़ी। महाराष्ट्र के कोच ने यहाँ बेंच स्ट्रेंथ को अपना स्ट्रेस किया दूसरी पारी में, लेकिन दिल्ली के खिलाड़ी कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। दिल्ली ने अपने दोनों मुकाबले, ग्रुप के दोनों मुकाबले दिल्ली अब तक हार चुकी है। पहला मुकाबला दिल्ली पहले मुकाबले में दिल्ली को हाथ लगी थी वेस्ट बंगाल के हाथों, और आज महाराष्ट्र ने दिल्ली को हराया है। तो कुल मिलाकर देखें तो महाराष्ट्र ने 2 जीत के साथ महाराष्ट्र ने अपने दोनों मुकाबले जीते हैं। महाराष्ट्र ने पहले राउंड में गुजरात को हराया, दूसरे राउंड में दिल्ली को हराया। महाराष्ट्र का आखिरी मुकाबला वेस्ट बंगाल से होगा। अगला मैच किसका है वो? अगला मैच
Now, I invite our chief guest, Sri Sandeep Pradhan ji, DG, Sports Authority of India, and our respected President, KHO Federation of India, Sri Sudan. I request Sri M.S. Tyagi, General Secretary, KKFI, please escort our guest, Sri Sandeep Pradhan ji, DG, Sports Authority of India, and Sudhanshu Mittal ji, President, KHO Federation of India. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Team. पराग बंसोले और अब टॉस होने जा रहा है। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री संदीप प्रधान जी, डीजी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दोनों टीमों के लिए उन्होंने सिक्का उछाला और जैसा कि मैं देख रहा हूं, Team Karnataka won the toss and choice defense. Thank you, sir. Thank you very much. Well, an interesting contest on the cards between two teams there in the middle. Karnataka taking on Andhra Pradesh in this particular outing. Both teams having fortunes that are contrasting in nature. In the opening game, Karnataka getting the better. The first win that Karnataka managed was against Tamil Nadu, and while Andhra Pradesh were not able to get a win under their belt as they lost their opening match against Kerala. So this is Group B contest from the 36 National Games in Gujarat. We are at the Sanskar Dham ground. This is the venue that is almost 20 kilometers away from Ahmedabad city, which is going to play host for the next 5 days. We are in action. We are on day number 2, match number 2 on day number 2, clearly between two teams in the middle. Karnataka taking on Andhra Pradesh in the men's section from Group B. Two teams that would be looking, one team would be looking to claw its way back into the points board, Andhra Pradesh, while Karnataka will be looking to consolidate, make it 2 wins in 2 matches and look for a place in the knockout stage. So in a way, this is going to be very interesting match so far as Andhra Pradesh is concerned. Karnataka has already won their one match. Yesterday only, that was very competitive match indeed. Initially, Tamil Nadu had an edge, but in the second half, Karnataka managed to see to it that they achieved victory, and that took comprehensively, sparing some time. But at the moment, the play is about to resume, and the defenders and chasers must be gearing up to prove their mettle. But at the moment, Andhra Pradesh chasers are planning to have some strategy how to encounter, because particularly as we have been telling you repeatedly that the first match is going to be very vital for any team, and so their first goal or ultimate goal would be to claim maximum points in first 2 or 3 minutes, because normally, as we know, that if you score 9 victims in the entire slot of the timing, that is 9 minutes, that is per minute, if you can claim a point, then that will, particularly as per the playing conditions of this event, it will turn out to be 18 points. So the play is about to resume.
defenders are ready. One is waiting at chaser number 3, and after the gap of 3, once again the second one, and the last is almost at the port, at the square, and the play has begun. बिल्कुल यहाँ कोशिश यही होगी कि आंध्र प्रदेश की एक बार फिर इस 36वें राष्ट्रीय खेल में कमबैक कर सके, क्योंकि कर्नाटका ने जीत के साथ इस प्रतियोगिता में आगाज किया है, तो कर्नाटक के पास 2 महत्वपूर्ण अंक है। आंध्र प्रदेश अपने खाते को खोलने की कोशिश करेगा इस प्रतियोगिता में, और 2 टीमें और जो इस ग्रुप में हैं वो है केरला और तमिलनाडु। ये पुरुषों के वर्ग का मुकाबला चल रहा है, टीम इवेंट खो खो का। खो-खो जिस पर महाराष्ट्र का वर्चस्व है। महाराष्ट्र, केरला और वेस्ट बंगाल 3 टीमें जो खो-खो में पुरुषों के वर्ग में हमेशा से हावी रही है। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की कोशिश यही होगी कि इन बड़े टीमों को वो चैलेंज कर सके, और इस प्रतियोगिता में कर्नाटका ने जिस अंदाज से शुरुआत की है, कर्नाटका से उम्मीद यही है कि कर्नाटका कुछ कमाल करेगी और कर्नाटका इस ग्रुप से सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। लेकिन उसके पहले उनको आंध्र प्रदेश की चुनौती को पार करना होगा। आंध्र प्रदेश की टीम मजबूत इरादों के साथ इस मुकाबले को खेलने के लिए उतरी। Yes, it has been a seeded start so far as this match is concerned, and I think there is one point. No, it was not there. So we are in the first batch, and the first batch is giving some torrid time at the moment. Number 13 is being chased, and they have been able to claim that point. So first 2 points for the chasing side. And so far as the structure of or the physical fitness of the players are concerned, they are having very good height in that case, and height does help at times because the approach becomes a bit easy for them. But at the moment, fouls are being created, and that's the problem. That's the problem for any team, because whenever you are incur a foul, it consumes some time and grab an opportunity for the opponents. Once again, you can see that he is at the pole. Will it be difficult? No, he has managed to survive, because it's very difficult at the pole to survive. And this time that was an attempt of pole dive, and pole dive is always beneficial so far as chaser is concerned, because they get maximum opportunity to tap the defender in the opposite side. But you see the running. It seems that they are running 100-meter sprint, and they are playing according to the plan. Number three, and it's not easy. It's not easy for the defenders to get them out, because this is the first batch and just 5 minutes and 43 seconds are left. They have been able to claim just 2 points. So far as defending side has done an exceedingly job. There is a claim and there is vociferous appeal, but they have succeeded in doing it, and the score moves to 4. So at the moment the score is 4. Slowly and steadily, the defending side is consolidating the position of the team by being at the court for a long time. And see, it's almost like hide and seek. It's almost like hide and seek, and see how he is changing the lane. Normally, defender prefers to cross the lane behind the chaser, and this is being done. Once again, that's a foul. See, this is the crucial thing so far as any team is concerned, because when you incur a foul, you not only consume some time, and that can be utilized in claiming the point, but that is not happening at the moment. And normally during the practice this is being taught, but of course it is easy to talk about all these norms, but when you are on the field and when you are having tremendous pressure, it's very difficult to implement the planning that is being done. And at the same time, the score is stationary at 4. Just 4
Just 4-point score, 4.9 minutes left, and the defending side has done an exceedingly good job, Anil. बिल्कुल तीनों ही पहले बैच के डिफेंडर्स एक बार फिर आंध्र प्रदेश के मेरे हिसाब से कर्नाटका के वापस डगआउट में। तो ऐसे में एक आंध्र प्रदेश ने शुरुआत धीमी की है, लेकिन आंध्र प्रदेश की कोशिश यही है कि यहाँ वो 12 से 14 अंक या फिर 16 अंकों का क्वेश्चन ले सके, क्योंकि कर्नाटका की टीम जीत के साथ इस प्रतियोगिता में आगाज कर चुकी है। तो ऐसे में आंध्र प्रदेश के पास ये मुकाबला करो या मरो वाली स्थिति वाला मुकाबला है। तो आंध्र प्रदेश की टीम की कोशिश यही है, उनके खिलाड़ियों की कोशिश यही है कि वो जिस यूनिटी या फिर जिस एकता के साथ वो खेल रहे हैं, कोशिश यही है कि किसी तरह से वो कर्नाटका के खिलाड़ियों पर दबाव बना सके। लेकिन अब तक जो मुकाबला, अब तक जो हमें खेल देखा है, उसमें कर्नाटका ने, भले ही कर्नाटका की शुरुआत धीमी हो, लेकिन कर्नाटका के खिलाड़ी अच्छी तरह से चकमा देने में कामयाब रहे हैं आंध्र प्रदेश के अटैकर्स को। कल की मैच में हमने देखा था तो केरला की पोजीशन फर्स्ट हाफ में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने कर्नाटका की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने फिर बाद में रिकवर किया एंड द मैच बिकेम वेरी इंटरेस्टिंग. विल इट हैपन टुडे? द चांसेस ऑफ हाई स्कोरिंग मैच आर लेस टुडे. See he is protesting, it seems. He was almost like protesting. He was not happy. He must have thought that I have tapped, but that was not the case. See, once again there is a claim of a pole dive, and बिल्कुल 2 बार रेफरी को एक तरह से बताते हुए कि उन्होंने खिलाड़ी को पकड़ा है, और समझना होगा वैद्य जी, क्योंकि ये 2 खिलाड़ी मतलब 4 अंक होते हैं, काफी महत्वपूर्ण होता है खो खो के खेल में. and all these referees and umpires are having eagle's eye. They are very vigilant, and see how they are running. It seems that they are also running for 9 minutes along with the chasers, and why not? Because they have to do from each and every angle, and particularly when it is tapping, it's very difficult to judge where if you are far off. They are taking the position and they are trained. So now the score is 12. The score is 12, and the number 2 is in front of the commentary box, but now he is not being chased. He is in front of us. He got some breather time at the pole, and you see, particularly in Kho, if you get 5 seconds breather time, that's a blessing. So at the moment the score is still 12, and the defenders are desperately trying to avoid tapping, and they have been succeeded so far. And all the defenders on your court are sturdy, and they are having good height also. And as we have been telling you, height does help, but at times it becomes a problem also in terms of height. But we haven't seen dupe turn so far, because all the while they are escaping, and they are not required to go for that dupe turn as such, because they are running near the central lane and not giving any opportunity. The score is still stationary, just 23 seconds left. बिल्कुल 20 सेकंड का खेल बचता हुआ 12-0 से आंध्र प्रदेश आगे, लेकिन कर्नाटका ने जिस तरह से कर्नाटका ने खेल दिखाया है, कर्नाटका को पहली जीत मिलने के बाद 36वें राष्ट्रीय खेल में कर्नाटक के पास कॉन्फिडेंस है, और 14 अंक 7 सेकंड का खेल बचता हुआ आंध्र प्रदेश का 1-2 और अंक लेने में कामयाब रहेगा, लेकिन मौका नहीं दिखता. अंपायर का लॉन्ग विसल, और ये हाफ समाप्त.
Maharashtra women in second match. Maharashtra versus Odisha in women's session. Maharashtra versus Odisha women's session first call. बिल्कुल पहले हाफ के अब रोल्स रिवर्स हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश डिफेंड करेगा जबकि कर्नाटका अटैक करेगी और 14 अंकों की बढ़त है आंध्र प्रदेश के पास। लेकिन आंध्र प्रदेश के लिए यह मुश्किलें बढ़ेगी क्योंकि जिस तरह से कर्नाटका जिस चतुराई और चपलता से वो खेल रहे हैं, ज़रूर प्रेशर होगा आंध्र प्रदेश की टीम पर। लेकिन कर्नाटका ने यहाँ धीमी शुरुआत की है। लगभग 30 सेकंड का खेल समाप्त और तीनों ही फर्स्ट बैच के डिफेंडर्स आंध्र प्रदेश के अब भी मैट पर मौजूद और कोशिश अब यही होगी कि आराम से इस मुकाबले में 14 अंकों की जो लीड है उस लीड को वो बरकरार रख सके और कर्नाटका को कोई बड़ी लीड या फिर कोई बहुत बड़ी एडवांटेज यहाँ हासिल करने की कोशिश ना दे ताकि वो फायदा उठा सके। लेकिन जैसे ही हम बात कर रहे थे, पहला खिलाड़ी आंध्र प्रदेश का आउट हो चुका है। पहला आंध्र प्रदेश का कर्नाटका का पहला अटैकर आउट हो चुका है। तो 2 अंक 2 और 2 4 अंक मिल चुके हैं। तो एक तरह से जिस धीमी शुरुआत की बात हम कर्नाटका से कर रहे थे, वो धीमी शुरुआत में अब गियर चेंज हमें देखने को मिलता हुआ और वो गियर चेंज का कमाल। 4 अंक बोर्ड पर, 4 अंक कर्नाटका के और आंध्र प्रदेश के पास है 14 अंक। So the first batch is there and this is the last defender of the first batch. Still 7.22 seconds, 7 minutes and are left and the score is 6. Though they have been able to manage for 6 points. So the second batch is there and number 12, number 6. But at the moment, some professional KHO is being displayed by both the teams, and particularly so far as Karnataka is concerned. Yesterday also we have seen that there were ups and downs, but they managed to come over the pressure and they managed to win that match. So today it's going to be very interesting because it should not be difficult for them. They have done a good job so far and they are desperately trying to win this match and continue the momentum of winning streak. At the moment the score is 8. Slowly and steadily they are reaching towards the score of Andhra Pradesh, because still there are 6 minutes, more than 6 minutes are left. There is plenty of time. बिल्कुल 6 मिनट का खेल अब भी इस इनिंग्स में बचता हुआ और आंध्र प्रदेश की टीम की कोशिश। 2 और अंक कर्नाटका के हाथ। कर्नाटका डबल डिजिट पे पहुंच चुका और लगभग 5.5 मिनट का खेल, यानी पूरी तरह से कर्नाटका ने अपना पकड़ इस मुकाबले में बना रखा है। लेकिन देखना होगा बचे क्षणों में, बचे मिनटों में किस तरह का पलटवार आंध्र प्रदेश करता है, क्योंकि यहाँ इस मुकाबले में एक तरह से कर्नाटका के पास अब समय है कि धीरे से या फिर चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी कर सके जिससे कि वो आंध्र प्रदेश पे पूरी तरह दबाव बना सके। And we haven't seen the play outside. I mean, quite far from the central lane. They are playing at the central lane only and leisurely at times crossing the lane. And regularly KHO is being given, and they are desperately trying to claim some points. But at the moment there was some confusion. The score is still 10-14. They are playing according to the plan. And not only that, but they are always
very eager to see to it that they don't give an opportunity. But at the same time, chasers are desperately trying and at times succeeding also, but not that much. The score is still stationary. Despite their strenuous efforts, they haven't been able to claim. Now this time they have succeeded it and in claiming the point, and so the score moves to 12-14. Still 4 minutes and 5 minutes left. See, this is how he was tapped. He controlled his movement and had a tap. Rather, it was like a slap rather than the tap. The score is still 12. And all the while, the defenders are having an eagle's look at the chasers, and why not? They will have to do it because the chasers' job is to chase and touch them, and they prefer to be away from them. And it is the basic rule. It is the basic rule of KHO that you have to be away from your opponent. That is, you have to be away from the chaser. That is the only thing that is important so far as KHO is concerned, and it is a basic rule for any KHO player. And that they have been trying to do here also, but they are professionals. They know all the tricks of the trade. And at times, yes, that's it. One more point so far as the chasers are concerned. And the score is level at the moment. It is 14 all. It's over to Anil. बिल्कुल 14-14 की बराबरी, लगभग 2 मिनट 45 सेकंड का खेल बचता हुआ, यानी पूरी तरह से जिसकी बात हम कर रहे थे, जिसका हमें डर था कि आंध्र प्रदेश अपने 14 पॉइंट्स को डिफेंड करने में नाकाम रही है, और कर्नाटका जिस फुर्ती और जिस चुस्ती के साथ वो इस मैदान में खेल रहे हैं, उनका सीधा आइडिया यही है इस मुकाबले में वो लीड बना सके। 2 से 3 खिलाड़ियों को आउट करने की कोशिश होगी। 6 से 8 पॉइंट की लीड की वो पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अब उनके पास शेष है 2 मिनट और 20 सेकंड, यानी 140 सेकंड का खेल उनके पास बचता हुआ। 140 सेकंड और आखिर के 2 मिनट में आप 2 से 3 खिलाड़ियों को आउट कर सकते हैं। तो पूरी कोशिश यहां अब कर्नाटका द्वारा इस मुकाबले में एक बार जोरदार वापसी करने की और एक बड़ी लीड के साथ अपने दूसरी पारी में कंफर्ट के साथ या फिर आराम के साथ दूसरी पारी में बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करने की। और जैसे भी हमने पहले भी देखा है कि ये 2 मिनट में जो पॉइंट्स होंगे वो बहुत वाइटल प्रूव होने वाले हैं, और ये 2 पॉइंट और ले लिए हैं और स्कोर बढ़ता हुआ 16 पॉइंट्स, नॉट रन्स। Of course, it is similar to cricket in that case, because there we say that batting and bowling. Here also it is almost chasing and defending. But anyhow, we can very well compare KHO and cricket, because so many cricketers used to play cricket, or rather they play cricket. Not only that, but at international level also. I mean, particularly, the dives are concerned. Even special training is given by the cricketer and none other than John T. Rhodes. John T. Rhodes had been given some training to the KHO players also, and most of the cricketers also play. And Sandeep Patil was a very good KHO player. Kiran More was a very fine cricketer. Praveen Amre was a very good cricketer. Even seasoned all-rounders also used to play it. Even veterans also used to play it. And Vijay Merchant said that I feel sorry that I did not adapt the game of KHO. I didn't know it, that this is a man's game. I for one thought that it is a female's game. Otherwise, I would have definitely preferred it. Sunil Gavaskar also said the same thing. Had I known that the game is so interesting, I would have preferred to play KHO rather than cricket. But at the moment, the score is 18-14, just 19 seconds left, and it's over to Anil to describe the बिल्कुल excited 14 moment. सेकंड का खेल बचता हुआ, 4 अंकों का बढ़त कर्नाटका बनाने में कामयाब रही। आंध्र प्रदेश की कोशिश यही होगी लीड की या फिर बढ़त को ज्यादा नहीं होने देने की, क्योंकि फिर मुकाबले में बने रहने का एक चांस है, वरना ये लॉन्ग हूटर और ये पहला हाफ समाप्त। आंध्र प्रदेश के पास 14 अंक, कर्नाटका के पास 18, 4 अंकों की बढ़त कर्नाटका के पास।
समय आ गया है। हमारे बीच ऐसे महान हस्तियां जो पधारी हैं, उनके स्वागत के लिए सबसे पहले मैं जो नाम लेने जा रहा हूँ, आप जो अंदर मेहमान होंगे कि इन्होंने खोखे को उठाने के लिए और इसकी चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए जो अपना योगदान दिया है, वो तारीफ काबिल है। मैं सबसे पहले स्वागत करवाना चाहूंगा हमारे आदरणीय अश्विनी कुमार जी का, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ नेशनल गेम्स के हैं और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ऑफ गुजरात। आई रिक्वेस्ट अवर प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया सुधांशु मित्तल जी, प्लीज वेलकम अश्विनी कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल गेम्स। क्या वो कौन सा वायर है? खींच दे ऊपर। कौन सा वायर? ये वाला वायर है, नीचे रख दे। एक मिनट, थैंक्स। वेल, आंध्र प्रदेश ने एक आंध्र प्रदेश की कोशिश यही होगी कि एक 4 अंकों की लीड जो कर्नाटका बनाने में कामयाब रही है, उसको पहले कम करने की। दूसरे पारी की शुरुआत होती हुई 9 मिनट का खेल। हर पारी में 9 मिनट एक टीम के पास है ज़्यादा से ज़्यादा अंक बटोरने के लिए। एक राउंड में आप अगर पूरी टीम को एक बार आउट करते हैं तो 18 पॉइंट आपके हाथ आता है। तो अगर आप डबल करते हैं 36 पॉइंट आपके हाथ लगता है। अगर पूरी टीम 2 बार आउट होती है या फिर पूरे डिफेंडर्स 2 बार आउट होते हैं, क्योंकि 9 डिफेंडर्स होते हैं, एक डिफेंडर को आउट करने के 2 अंक आपको मिलते हैं। तो यही इस खेल की खासियत है और अगले 9 मिनट आंध्र प्रदेश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इस मुकाबले में, इस प्रतियोगिता में या फिर इस 36वें राष्ट्रीय खेल में अपने उम्मीदों, अपने सपने को जिंदा रखने के लिए। और कर्नाटका की कोशिश यही, पहली जीत के बाद एक और जीत के साथ इस ग्रुप में वो 2 जीत के साथ एक तरह से अपने सेमीफाइनल या फिर नॉकआउट स्टेज की राह को वो पक्का कर सके। तो बिल्कुल दोनों ही टीमों ने जिस तरह से कोशिश या फिर और जिस तरह से दूसरी पारी की शुरुआत की है, आंध्र प्रदेश दूसरे पारी में धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस की पॉलिसी के साथ मैदान में उतरते हुए, क्योंकि लगभग 30 सेकंड का खेल समाप्त, अब भी 4 पॉइंट का डेफिसिट है आंध्र प्रदेश के पास। और आंध्र प्रदेश की कोशिश यही होनी चाहिए कि जल्द से जल्द इस 4 पॉइंट को, वो 4 पॉइंट के डेफिसिट को हटा सके, ताकि वो कोई कमाल कर पाए या फिर एक लीड बना पाए जिससे कि वो कर्नाटका पर दबाव बना सके।
So this is going to be a battle of nerves, particularly because the lead is just 4 points, and definitely this lead may prove to be very vital at the end of this match. But at the moment, of course, not much excitement is prevailing at this stage, but definitely they are trying to garner some points, and we have seen that particularly the sitting position of the chasers are particularly in two forms. That is, either it is a bullet toe method or parallel toe, and we can very well see here that most of them preferred a parallel toe method. That becomes very easy for them to get up and take up the momentum. Particularly first 2-3 steps prove to be very vital so far as the chasing is concerned, because that accelerates, that gives the momentum. And at the moment the score is 2. So that was a valiant effort, and but it was a direction foul, and the umpire has very rightly pointed out that, gentlemen, you have to go on this side rather than this one. Anyhow, that is part and parcel of the game, and it is in a jovial way, we can say that, but that is a Herculean task. But extreme professionalism is being implemented in sports, in every sports rather, and not only that, but technological devices also adds to the flavor of it, and particularly so far as the Sanskar Dham sports complex is concerned, the KHO flavor is prevailing all over, Anil. बिल्कुल, जिस उम्मीद के साथ यहाँ दर्शक भी मौजूद है इस खेल का मज़ा उठाते हुए, ये काबिले तारीफ़ है, क्योंकि समझना होगा गुजरात में ये नवरात्र का समय है, और नवरात्र के समय रात को डांडिया करने के बाद इस तरह से जो दर्शकों के बीच जो ऊर्जा है, दर्शकों के बीच जो एनर्जी है, राष्ट्रीय खेल 36वें राष्ट्रीय खेल का मज़ा उठाने का, ये काबिले तारीफ़ है, क्योंकि गुजरात ने इस 36वें राष्ट्रीय खेल जो 7 साल बाद हो रहा है, इसकी मेज़बानी करने में लगभग उनके पास 100 दिन से कम समय था। उसके बावजूद जो चुनौतियां थी, उस चुनौतियों को पार करते हुए इस राष्ट्रीय 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया है, और जिस अंदाज या फिर जिस तरीके से उन्होंने इसकी मेज़बानी की है, हमने 2 दिन के खेल अब तक देखे हैं, इसमें कोई शंका नहीं, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा किसी भी टीम को, जो भारत के अलग अलग राज्यों से जो लोग आए हैं और यूनियन टेरिटरी से जो लोग आए, खिलाड़ी जो आए हैं, वो सब खुश हैं जो आयोजन किया है गुजरात ने, और गुजरात के 6 शहर जिन्होंने इस राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया है, उन्होंने बखूबी मेज़बान के रूप में एक अच्छा प्रदर्शन किया है, और यही फ़ायदा मेरे हिसाब से खेल में खिलाड़ियों को दिखाने का मौका मिलता है, क्योंकि जब आप संतुष्ट होते हैं आयोजन से, तो आप ऑटोमेटिकली आपके प्रदर्शन में भी वो निखार दिखने को मिलता है, और हर टीम के खिलाड़ी, वो किसी भी स्पोर्ट में हो, हमने अब तक जो देखा है उसमें हमें निखार देखने को बहुत मिला है। तो कुल मिलाकर 6 अंक, यानी इस तरह से आंध्र प्रदेश ने बढ़त बना ली है। आंध्र प्रदेश के पास अब 2 अंकों की बढ़त आ चुकी है, और आंध्र प्रदेश की कोशिश यही होगी कि वो जब अटैक करेंगे, अब यहाँ से जो समय आपके पास है सिर्फ 4 मिनट 20 सेकंड का, इस समय में वो ज्यादा से ज्यादा अंक बटोर सके। 2 और अंक उनके हाथ, 8 अंक हो चुके हैं, लेकिन 4 अंकों की बढ़त, 4 अंकों का डेफिसिट था, तो डेफिसिट को हटाने के बाद 4 अंकों की बढ़त है आंध्र प्रदेश के पास। आंध्र प्रदेश के पास अगर आंध्र प्रदेश को इस मुकाबले को टाइट करना है, तो आंध्र प्रदेश को मेरे हिसाब से यहां से लगभग 5 या 6 खिलाड़ियों को और आउट करने होंगे, जिससे कि वो इस मुकाबले में बने रहे और आखिरी पारी में वो कर्नाटक पर दबाव बना सके। और ये जहाँ तक ये इनिंग्स की बात करें, तो वैसे देखा जाए तो अभी तक थोड़ा नेक टू नेक कह सकते हैं, लेकिन जो लीड जो थी वो 4 पॉइंट्स की लीड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है इस मामले में। लेकिन अभी भी 3 मिनट और 35 सेकंड का समय बाकी है, तो इसमें कितने पॉइंट्स वो गार्नर कर सकते हैं, कितने पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना आसान तो नहीं होगा, ये बात तो पक्की है, क्योंकि जिस ढंग से डिफेंडर्स डिफेंड कर रहे हैं, वो उनके इरादे पक्के हैं, वो बता रहे हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव इन, वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी इजी पॉइंट्स एज सच, एंड दैट इज द रीज़न
or rather that is the result why the score is just 8 when less than 3 minutes are left. If the chasing side can manage to score at least 6 points in that case, then also it will be 14. And that may not be sufficient for them to defend. So at the moment, Karnataka is having an edge. But of course, we can't say anything because something may happen at the fag end of the inning. They can claim 2-3 points, particularly when the last match comes. But we have seen throughout that in all the teams, all the defenders are equally competent and they give fight till the end. As we see in the cricket also, because at the end, tailenders also play some vital role, and so is the case so far as the KHO is concerned, and particularly in defense. बिल्कुल 2 मिनट 13 सेकंड 2 मिनट 10 सेकंड का खेल बचता हुआ 4 अंकों की बढ़त है आंध्र प्रदेश के पास। 4 अंक अब 6 में बदल चुके हैं। 10 अंकों की पूरी तरह से अगर स्कोर कार्ड पर देखें, स्कोर कार्ड बता रहा है 10-0, लेकिन आपको समझना होगा 4 अंकों की डेफिसिट है, तो 6 अंकों की बढ़त है आंध्र प्रदेश के पास। 6 अंक उसे मेरे हिसाब से डबल डिजिट या फिर डबल करोगे तो भी मेरे हिसाब से आंध्र प्रदेश के पास उतना वो कम ही पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटका ने जिस तरह का खेल दिखाया, कर्नाटका ने पहली पारी में 16 अंक बटोरे थे, 18 अंक बटोरे थे पहली पारी में, तो साफ संकेत है कि पूरी टीम को वो आउट करने में कामयाब रही थी। क्या दूसरी पारी में कर्नाटका वो कर पाएगी? अगर ऐसा होता है तो कर्नाटका इस मुकाबले को आसानी से जीत लेगा, लेकिन अब कोशिश यही होगी आंध्र प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा अंकों को बटोर सके। 6 अंकों की बढ़त है, 6 अंक, और समय आपका समाप्त होता हुआ लगभग 1 मिनट 15 सेकंड का खेल, तो ऐसे में दबाव पूरी तरह से आंध्र प्रदेश की टीम पर। आपकी बात बिल्कुल सही है, दबाव बिल्कुल आंध्र प्रदेश की टीम पर है। और ये जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात करते हैं, हम खेल की बात करते हैं, तो अभी हमारे यहाँ देखते हैं हम कि हर जगह पर स्पोर्ट्स को बहुत मोटिवेशन दिया जाता है। इतना ही नहीं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो कहना है, एंड आई वुड लाइक टू कोट बिकॉज आई वोंट लाइक टू मिस अ सिंगल वर्ड फ्रॉम इट, एंड दिस इज व्हाट ही सेज, इफ द प्राइड ऑफ अचीविंग समथिंग फिनोमिनल इन स्पोर्ट्स that lifts the nation on international platform. So this event is definitely a part and parcel of the development at international level, and that is the reason why sports is being encouraged at every level, at every villages. Whenever you go to Gujarat, whenever you go in Gujarat, you will find the development program so far as sports are concerned. And at one stage, I would like to talk about the Gujarat government as well. At one stage, the sports budget was 2.50. Now it is 250 crores. Now it is 250 crores. बिल्कुल समय समाप्त दूसरी पारी में, और 12 अंकों की बढ़त बनाने में कामयाब रहे हैं। 4 अंकों का डेफिसिट, तो कुल मिलाकर आंध्र प्रदेश के पास डिफेंड करने के लिए सिर्फ 8 अंक है। 8 अंकों को डिफेंड करना 9 मिनट में मुश्किल होगा कर्नाटका का जैसी टीम के सामने, और दबाव पे होगी आंध्र प्रदेश की टीम। लेकिन कोच और मैनेजर मिलकर क्या कुछ नया रणनीति लाते हैं, देखना रोचक होगा दूसरे हाफ में।
बिल्कुल दूसरे हाफ की शुरुआत अब कर्नाटका अटैकर के रूप में होगी और आंध्र प्रदेश डिफेंड करेगा। और ऐसे में कोशिश यही होगी कि किस तरह से वो 8 पॉइंट की लीड जो उन्होंने दूसरे पारी में बनाई है, 12-0 है, लेकिन अगर आप टोटल स्कोर को देखें तो सिर्फ 8 पॉइंट की लीड है कर्नाटका के आंध्र प्रदेश के पास। और वो 8 पॉइंट को 9 मिनट में डिफेंड करना मुश्किल ही नहीं, मेरे हिसाब से एक चैलेंजिंग टास्क होगा आप आंध्र प्रदेश के लिए कर्नाटका जैसी टीम के सामने। और हूटर बचता हुआ और खेल की शुरुआत कोशिश यही होनी चाहिए कि ये जो पहले बैच ऑफ 3 रेडर्स है ये पूरी तरह से डटे रहे। और 6 मिनट तक अगर इस मुकाबले को ये तीनों डटे रहते हैं और सिर्फ 6 मिनट बचते हैं, 3 मिनट अगर इन्होंने समय निकाल लिया तो एक मुकाबले में एक अच्छा कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिल सकता है। You are absolutely right, Anil. And it is going to be a Herculean task so far as the Andhra Pradesh team is concerned. Because looking to the past performance and the potential of Karnataka, yesterday they also did exceedingly well. Of course, that was a high-scoring match. It was 44-42. And today is going to be a low-scoring match, it seems. So it will be interesting to see when they achieve this target. But all the players are enjoying, and why not, as my colleague Anil has very rightly pointed out, that they have enjoyed the festivals of Navratri, Garbas and all that. And after performing those Garbas even up to 12 o'clock, and they are performing here, hats off to their strategy, the endurance level, and hats off to their stamina. Of course, they must have planned accordingly. That is a different thing. But when you are on Garba ground, you forget everything. And so is the case with them also. Because it is a big, big festival for sports person of India. National Games is definitely a platform to provide you to represent at international level. And that is being done and that is being seen. So at the moment, the score is 12. बिल्कुल 2 पॉइंट का से खाता खुलता हुआ कर्नाटका का, या कर्नाटका ने 2 पॉइंट से अपना खाता खुला है, यानी पहले खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। यहाँ अभी भी 7 मिनट का खेल बचता हुआ, 6 पॉइंट्स है डिफेंड करने के लिए। आंध्र प्रदेश के लिए टेढ़ी खील यहाँ से साबित होगी इस मुकाबले में वापसी करने के लिए। लेकिन जिस तरह से कर्नाटका ने खेल दिखाया, कर्नाटका पूरी तरह से हावी है आंध्र प्रदेश पर। और आंध्र प्रदेश के खिलाड़ियों की कोशिश यही है कि जितना हो सके इस मुकाबले को डीले करे, लेकिन अब तक हाथ उनके कुछ नहीं लग रहा। और कर्नाटका टीम पूरी तरह से दबाव बनाती हुई, 2 और अंक, 4 अंक हो चुके हैं। अब सिर्फ 4 अंकों की बढ़त है और 6 मिनट 30 सेकंड का खेल अब भी इस मुकाबले में बचता हुआ। तो कर्नाटका के लिए एक तरह से कर्नाटका अपनी जीत को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। वहीं आंध्र प्रदेश दबाव में और खिलाड़ियों के चेहरे पे साफ दिखता हुआ किस तरह की मुश्किल, किस तरह की परिस्थितियों को वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि इतना समय वेस्ट करना इस मुकाबले में मेरे हिसाब से कठिन ही नहीं, असंभव है। और ये समय को देखते हुए लगता है कि जो पहले इनिंग्स को जो लीड है वो इतनी वाइटल नहीं प्रूव होगी। वैसे अदरवाइज ज़्यादा लीड होती तो भी ये परफॉर्मेंस के हिसाब से वो अचीव कर सकते थे। सिर्फ 4 अंकों का लीड अब भी कर आंध्र प्रदेश के पास, और ये 4 अंक और घड़ी पर लगभग 5 मिनट 40 सेकंड का खेल अब भी बचता हुआ। तो ऐसे में प्रेशर में है आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी, लेकिन कर्नाटका के खिलाड़ी समझते हैं कि 4 अंक यानी 2 खिलाड़ियों को आउट करना जरूरी। तो कोशिश कर्नाटका की यही कि यहाँ से वो संभल कर खेले, क्योंकि उनके खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं और वो डगआउट में जा चुके हैं। तो ऐसे में कोशिश अब यही होगी यहाँ कोई खिलाड़ी इंजरी ना पिक करे और यहाँ से 3 खिलाड़ियों को और आउट कर इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर पाए। बिल्कुल सही बात है। और जहाँ तक कर्नाटक की बात करते हैं हम, तो वो जितना मार्जिन से जीतेंगी, यानी वो स्पेयर टाइम से जीतेंगी। और यदि वो स्पेयर टाइम से जीतते हैं तो अगले राउंड में जब जाएंगे तब उनको ये मोरल बूस्टर भी होगा। और एट द सेम टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस दे में हैव देम इन द रेटिंग्स आल्सो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट द मोमेंट द स्कोर इज 4-12 and the target, as you know, is 8 points. So that means, so I think now 6 points. The score is 6 now. When we were talking about it, one more claim has been approved by the match referee, but at the moment number 2 is being chased, and
So now we are at the final or fag end of this match. One can very well say a nil, because now it is a question of seconds only, rather, so far as the margin of victory and particularly the time. Now the question is not if, now it is when. बिल्कुल सिर्फ एक और खिलाड़ी को आउट करने की कोशिश होनी चाहिए कर्नाटका की। 2 और को कर लेते हैं तो मुकाबला अपने नाम कर लेंगे आसानी से, लेकिन उससे पहले 4 मिनट की बाधा को पार करनी होगी। और जैसे ही हम बात कर रहे थे, एक और खिलाड़ी आउट, यानी 8 पॉइंट हो चुके हैं जिसकी जरूरत थी कर्नाटका को। वो टारगेट वो पूरा कर चुके हैं। मैच बराबरी पर आ चुका है। अब यहां से रोचक होगा कि कर्नाटका अगले खिलाड़ी को आउट करते ही कर्नाटका इस मुकाबले को जीत जाएगा, और 30 सेकंड का खेल हमें और देखने को मिलेगा। सेकंड इनिंग्स का सेकंड हाफ चलता हुआ, और यहां कर्नाटका इस मुकाबले को पूरी तरह जीतने के लिए, और कर्नाटका इस 36वें राष्ट्रीय खेल में अपने दूसरे जीत की ओर धीरे धीरे अग्रसर करता हुआ। और आंध्र प्रदेश दोनों मुकाबले, अपने पहले और दूसरे मुकाबले को हारकर लगभग अब दूसरे टीमों के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पर इंतजार करेगा कि वो क्या करेंगे और कैसे सेमीफाइनल की राह पक्की करेंगे। अभी 30 सेकंड शुरू होगा। Odisha and Maharashtra. Please report near the interval. बिल्कुल इस मुकाबले को आसानी से कर्नाटका अपने नाम करते हुए कर्नाटका ने यहां लीड बना ली है, और ये मुकाबला समाप्त, और कर्नाटका को जीत। कर्नाटका 2 जीत के साथ एक तरह से सेमीफाइनल्स में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश कर रहा है। कर्नाटका ने पहले मुकाबले में
रेफरी ने कहा आपका हाथ नहीं लगा और अंक एक बार फिर हाथ नहीं लगता हुआ। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो 16 अंकों की बढ़त बन चुकी है अब महाराष्ट्र के पास। जिस बात का हमें डर है 18 पार कर लेते हैं तो प्रेशर पे जरूर रहेगी ओडिशा की टीम। और 16 अंकों की बढ़त 16-0 से महाराष्ट्र आगे ओडिशा के खिलाफ। समय है 90 सेकंड का इस मुकाबले में। पहले इनिंग्स के पहले राउंड के मुकाबले में 90 सेकंड का खेल अब भी बाकी और ओडिशा की टीम दबाव में गत विजेता महाराष्ट्र के सामने। Because I mean, first 9 defenders are almost going to be out in that case, because 8 are already back in the dugout, and at the moment the score is 16. Maharashtra will definitely try to see that they get out the entire team, all out rather, in that case, and that has happened. So the entire team of a contingent of 9 are back. So the new batch is there. So that means that this is their first batch, and so it will be interesting to see how they defend. And as per the rules, you cannot change the number of the defender. So far as the defending side players are there, in the dugout they are known as runners, but as soon as they enter the court, they are called defenders. And the particular defender who is being attacked is called active defender. बिल्कुल 18 सेकंड का खेल बचा हुआ इस मुकाबले में। 18-0 से आगे लगभग फाइनल काउंटडाउन की ओर बढ़ते हुए 9 सेकंड। 18-0 से महाराष्ट्र आगे। महाराष्ट्र ने एक तरह से पूरी टीम को आउट करने में कामयाब हुए। 9 के 9 खिलाड़ी आउट करने में कामयाब है। दूसरा मैच शुरू होता लेकिन रेफरी का हूटर और ये हाफ समाप्त। 3 मिनट के ब्रेक के बाद एक बार फिर ओडिशा के खिलाड़ियों की कोशिश होगी कि वो अपना दमखम दिखाए और इस मुकाबले में बने रहे गत विजेता महाराष्ट्र के सामने 36वें राष्ट्रीय खेल में।
बिल्कुल, यहाँ मुकाबला एक बार फिर शुरू होता हुआ, दोनों ही टीमों के बीच में 9 मिनट का खेल और अंपायर का विसल का इंतजार कर रहे हैं दोनों ही टीम। कोशिश यही होगी कि 18 की लीड बना चुके हैं महाराष्ट्र। उड़ीसा की कोशिश यही होगी कि एक जोरदार शुरुआत के साथ इस मुकाबले में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सके हमें इन दोनों ही टीमों के बीच। कदम से कदम मिलाने की कोशिश होगी ओडिशा की महाराष्ट्र के साथ, लेकिन ये करना, जितना बोलना आसान है उतना ही मुश्किल करना है, क्योंकि महाराष्ट्र की टीम हमें समझना होगा गत विजेता टीम है और इसे कहा जाता है द नर्सरी ऑफ खो खो इन इंडिया। और यहाँ की टीम जो अंदाज, जिस लय से वो खेलती है और जिस रणनीति को हर बार वो मैदान में लेकर आती है, हमेशा से विपक्षी टीमों को चकमा देने में कामयाब रहती है। तो कोशिश यही होगी ओडिशा की टीम द्वारा कि कमबैक कर सके इस मुकाबले में, लेकिन प्रेशर है पूरी तरह से महाराष्ट्र की टीम, ओडिशा की टीम पर, और महाराष्ट्र की टीम भी कोशिश यही करेगी कि इस मुकाबले में वो बने रहे। और ओडिशा पर पूरा प्रेशर होगा कि इस मुकाबले में अब क्योंकि 18 पॉइंट की लीड है तो इस लीड को कितना कम कर सके ताकि दूसरी पारी में उन्हें मौका मिल सके कमबैक करने का। So number 1, number 6 and number 8, Priyanka, Apeksha and Rupali are there on the court. They are defending for Maharashtra. And this is the first batch of Maharashtra team, so it is natural that their best will be there, and Priyanka has definitely proved herself, and so is the case with other defenders as well. And so far as the medal tallies are concerned, in Kho also there will be 8 medals, that is 2 gold, 2 silver and 4 bronze. So the first point has been claimed by Odisha, and they must be happy with that because they got rid of one of the best defenders. But at the moment number 1 is being changed, and number 1 is Priyanka, who did exceedingly well in the last match also. And normally it is seen that when they get exhausted, they prefer to play in single chain. But now this is the beginning of the match, so they are full of stamina, full of energy. And why not? This event is such that boosts up your morale, that boosts up your energy level. But this time that's going to be no. The defender proved to be quicker than the chaser. And this time that's going to be very vital. No, once again. बिल्कुल Odisha chasers are compelled to give quick throws, but still they are not able to garner any points at this stage. And number 8 yesterday also did exceedingly well, and she is giving torrid time to and the most important thing is they know how to conserve the energy. They are not running very fast, they are not exhausting themselves, and they see to it that they always evade a tap. And that is the thing that is being happening at the moment. The score is 4 as against the 18 runs score, 18 points. So it is 18-4. बिल्कुल ओडिशा की कोशिश यही इस मुकाबले में वापसी करने की या इस मुकाबले में बने रहने की, क्योंकि पहली पारी के आधार पर जो लीड मिलती है वो कैरी फॉरवर्ड होती है, और महाराष्ट्र इसकी कोशिश पूरी करेगा कि जो 18 पॉइंट उन्होंने पहले राउंड में गैदर किए है या फिर पहली पारी में जो उन्होंने गैदर किए उसको वो पूरी तरह बनाने की या फिर भुनाने की कोशिश करेगा। और ओडिशा की कोशिश यही कि अब तक 5 मिनट का खेल, लगभग 5 मिनट 5 सेकंड का खेल बचा हुआ इस मुकाबले में, लेकिन अभी भी ओडिशा के खिलाड़ी पहले बैच ऑफ डिफेंडर्स महाराष्ट्र के जो है उनको आउट करने में नाकाम है। और प्रेशर ओडिशा की टीम पे, जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस यहाँ फ्लाई हो रहे हैं, एक एक करके हर कोई खिलाड़ी बता रहा है और ये प्रेशर साफ दिखता है। 2 और पॉइंट पहला बैच ऑफ जो पहले बैच ऑफ डिफेंडर्स हैं वो आउट हो चुके हैं, तो इस तरह से 6 अंक हाथ लग चुके हैं ओडिशा के 6, ओडिशा 18, महाराष्ट्र स्कोर लाइन। But now almost just 4.32 seconds are left, and Odisha has managed to score just 6 points as against the 18 scored by Maharashtra. And particularly so far as Maharashtra defenders are concerned, they used to play for 2-3 minutes minimum, and some of them even play for 6 minutes also.
So it's going to be very tough task so far as Odisha is concerned. At the moment, the score is 6. Oh, that's it. That's it. Once again, the foul was created, and she was asked to go back to her position, back to the reverse where she started the direction in that case. Because when you take your direction, you have to go in that direction only. See the intelligence of Maharashtra player. She knows fully well that the chaser that has taken the direction cannot come to her, and that's why she was tapped, but it was not allowed. So this is all the player has to learn. You have to learn the laws of the game, but this time they have succeeded, but she has done an exceedingly job, and the score moves to 8 at the moment, 3.17 seconds left. But at the moment, the tussle is going on not between Leather and Willow, but between defender and the chaser. And on your screen, you see some dignitaries, and it has been the hallmark of this event that so many dignitaries have blessed the game of KHO with their presence. And that has motivated the players as well. We have seen some international players, we have some executives, we have some top bosses, and not only that, but the president of KKFI, Sitanshu Mittal sir, has already been with us since last 2 days, and he has been motivating the game of KHO not only in India but international platform as well. बिल्कुल 2 मिनट 20 सेकंड का खेल, 2 मिनट 25 सेकंड का खेल बचता हुआ पहले हाफ में, और पहले हाफ में ओडिशा के खिलाड़ी चपलता के साथ इस मौके को इस मुकाबले में बने हुए हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र के खिलाड़ियों की चतुराई के सामने विफल हो रहे हैं और उन्हें वो पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं। अब भी 10 पॉइंट का फासला, 2 मिनट 7 सेकंड का खेल बचता हुआ। महाराष्ट्र की टीम पूरी तरह से ओडिशा पर हावी, ओडिशा को कोई ना कोई रणनीति में बदल करनी होगी। जब बात हो रही थी 2 और अंक ओडिशा लेने में कामयाब हुआ है, लेकिन स्कोर लाइन पर रिफ्लेक्ट नहीं करता हुआ, इसका मतलब रेफरी ने वो 2 अंक दिए नहीं, और इस तरह से अब भी कोशिश 10 अंकों की बढ़त है महाराष्ट्र के पास, और महाराष्ट्र पूरी तरह दबाव बनाता हुआ ओडिशा पे कि ओडिशा कुछ यहां से अलग रणनीति करे। इसी समय स्कोर में अपडेट, 10 पॉइंट ओडिशा के पास, 18 पॉइंट महाराष्ट्र के पास, और महाराष्ट्र अब 8 पॉइंट की बढ़त पहले पारी की समाप्ति में मैं कहूंगा बहुत बड़ा लीड, और ओडिशा की टीम पूरी तरह से दबाव में रहेगी। वैद्य जी। Yes, definitely they are going to be under pressure in that case, but now they will definitely try to reduce the margin of lead in that case, so that they can have some platform, or so that they can have some advantage in the second innings. But this lead of 8 points, or rather it may be reduced a bit in that case, but the chances are very less looking to the performance and the caliber of Maharashtra team, because they are not giving in. And at the moment, number 7 is being chased. See how she is playing, how leisurely she is playing. She is consuming energy, not giving in extra efforts, because it seems that is in their genesis, and they are following the rules in that case. They are leisurely running with speed also, but without giving any extra efforts. And that बिल्कुल 22 सेकंड का खेल बचता हुआ, stationary at 10, and it's over to Anil. 22 सेकंड का खेल बचता हुआ, 17 सेकंड बचे हुए। महाराष्ट्र के डगआउट की तरफ एक नजर डालने की जरूरत है। जितने इंस्ट्रक्शंस वहां से आ रहे हैं खिलाड़ियों को, हमें यहां सुनने में दिक्कत हो रही है कि इतने सारे इंस्ट्रक्शंस जो आ रहे हैं महाराष्ट्र के डगआउट से, लेकिन महाराष्ट्र के खिलाड़ी जिस फुर्ती से और चतुराई से खेलते हुए ओडिशा की तेजी के सामने बुरी तरह से वो उन पर हावी है। 10-18 ओडिशा सिर्फ 5 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुआ है। मैं कहूंगा 8 पॉइंट की बहुत बड़ी बढ़त महाराष्ट्र के हाथ ओडिशा ने थमा दी है, और ओडिशा की टीम अब दबाव में रहेगी दूसरी पारी में।
पंजाब को। और ये दोनों ही टीमें जीत के साथ अपने अपने पहले मुकाबले जीतने के बाद यहाँ दूसरे मुकाबले में खेलते हुई, और दोनों टीमों की कोशिश यही होगी कि यहाँ बढ़त को और बढ़ा सके। लेकिन महाराष्ट्र ने 2 और अंक बटोर लिए हैं, तो महाराष्ट्र ने अपना खाता खोला 2 का डबल, यानी 2 खिलाड़ी पहले बैच ऑफ डिफेंडर्स में 2 डिफेंडर्स बाहर हो चुके हैं। तो जो ओडिशा की टीम है वो पूरी तरह से दबाव में है इस मुकाबले में, और ओडिशा की जो महिला टीम है उनकी कोशिश यही होगी कि इस मुकाबले में आप वापसी करें, तो करे कैसे। तो ज़रूर कोई फेरबदल, रणनीति में कोई फेरबदल करने की ज़रूरत, लेकिन हाथ नहीं लगता हुआ ये मौका, और खिलाड़ी एक बार फिर बचने में कामयाब। ओडिशा की 4 अंकों की बढ़त, कुल मिलाकर देखें महाराष्ट्र का स्कोर 22 और ओडिशा का स्कोर 10। So Maharashtra has managed to get rid of the first batch of Odisha, and the score is 6 at the moment. Now the second batch is there. Number 1 is being attacked. That is Sasmita. Maharashtra team is definitely trying to prove their champions approach, and particularly in this match, because we know that Odisha team is also a very good team in that case, and it is being trained by the renowned coach Sanjeev Sharma. And yesterday only I was talking to him that he told that our team is very new, but we are nurturing them to go for a kill, and it will be an experience, it will be an exposure, particularly to play against the best teams, because particularly Maharashtra and Kerala are at the top, and as you know there are 8 medals on offer, and at the moment the score is 8. There are 8 medals on offer, 2 golds, 2 silvers and 4 bronze. Last time 4 states divided those medals among themselves. That is, Maharashtra preferred to have 2 golds. Kerala said, okay, we will be happy with 2 silvers, and West Bengal and Karnataka said the bronze medals with them. Now it will be very interesting to see what happens this time, because it was 7 years back. So I mean, the other teams must have prepared themselves very nicely. So it's going to be a close contest. Bilkul. But anyhow, the champions don't relax. They don't relax, and they don't rely upon the performance of the past. And at the moment that we are seeing that it is consistency has been the slogan, or rather the mantra of Maharashtra KHO. It's over to Anil. बिल्कुल कोशिश यही होगी महाराष्ट्र की अपने पकड़ को मजबूत करने की। इस मुकाबले में महाराष्ट्र ने 8-0 की बढ़त बना ली है, और कुल मिलाकर स्कोर पर एक नजर डाले तो 26 अंक महाराष्ट्र के पास, ओडिशा की टीम दबाव में 10। और जैसे मेरे सहयोगी कमेंटेटर ने आपसे बताया, प्रफुल्ल वैद्या ने, जब उन्होंने ओडिशा के कोच संजीव शर्मा से बात की, संजीव शर्मा ने साफ संकेत दिए कि हमारे पास एक युवा, अनुभवी, उतना अनुभव से भरा टीम नहीं है, लेकिन 36वें राष्ट्रीय खेल में इन खिलाड़ियों को हम एक एक्सपोजर ट्रिप दे रहे हैं, और इन एक्सपोजर ट्रिप्स के माध्यम से कोशिश यही होगी इन खिलाड़ियों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो भारत देश में मौजूद है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट के साथ उनकी भिड़ंत होगी, और वो तजुर्बा उनके लिए मेरे हिसाब से वैल्यूबल होगा। यही महत्वपूर्ण सीख के साथ ओडिशा के खिलाड़ी यह मैदान में जूझ रहे हैं, चैंपियन, डिफेंडिंग चैंपियंस महाराष्ट्र के साथ, और महाराष्ट्र टीम जानती है कि इस मुकाबले को किस तरह से कंट्रोल करना है, इस मुकाबले को किस तरह से खेलना है, और महाराष्ट्र ने यहाँ 10-0 की बढ़त बना ली है, और महाराष्ट्र के पास अब भी 4 मिनट का खेल बचता हुआ, 4 मिनट 14 सेकंड का, यानी महाराष्ट्र इस लीड को दुगनी कर सकता है, और महाराष्ट्र टीम कोशिश यही करेगी कि अपने बेंच स्ट्रेंथ को भी इस मुकाबले में उतार सके, और अपने बेंच स्ट्रेंथ को भी यहाँ मौका दे सके उन खिलाड़ियों को अपने हुनर को तराशने के लिए। And the development at grassroots level plays an important role so far as international platform is concerned. But at the moment we are back to the game, the number 10, and as we have been telling you repeatedly that they prefer to play in single chain, and that is the most important factor, because when you play in single chains, the chasers are required to give frequent course, and of course it's not easy. Of course it's not easy to play in single chains. But these Maharashtra girls and other girls also, they always try to play in single chains. And these Odisha girls are also doing
the same thing at the moment. But it will be very interesting to see how far do they succeed in protecting themselves against Maharashtra. Of course, Odisha is not under pressure because they have not to prove anything extra. They know that this is a learning curve for them and they are here to learn the tricks of the trade from other teams, other experts, because we have seen that there are some international players as well, national players as well, and they will be trying to learn from them. And it is a learning curve for them. And particularly, it is interesting to note that in most of the states, now sports is being encouraged like anything because they know fully well that sports development creates an image at international platform as well. And it is a pride for them. It is a pride for them. The score moves to 14 at the moment. 2 मिनट 15 सेकंड का खेल अभी बचा हुआ घड़ी पर और महाराष्ट्र की कोशिश इस बढ़त को और बढ़ाने की और महाराष्ट्र के जो कोच है वो अपने बेंच स्ट्रेंथ की ओर जरूर एक नज़र दौड़ाएंगे। अपने बेंच स्ट्रेंथ के खिलाड़ियों को भी अपने हुनर, अपने इस प्रतिभा को दिखाने का यह मौका मिलेगा क्योंकि जो लीड महाराष्ट्र ने बना ली है इस मुकाबले में मेरे हिसाब से उड़ीसा के लिए यहाँ मुश्किल ही नहीं, काफ़ी चुनौतीपूर्ण सिचुएशन में है उड़ीसा की टीम कमबैक करने के लिए और महाराष्ट्र की टीम समय और इस खेल में अभी भी कोशिश यही कर रहे हैं। महाराष्ट्र की टीम 8 खिलाड़ियों को वापस वो डगआउट में भेजने में कामयाब हुए हैं। 16 अंकों की बढ़त एक बार फिर बना चुके हैं। 1 मिनट 30 सेकंड का खेल बचा हुआ, क्या वो 18 को पार कर पाएंगे? पहली पारी में उड़ीसा के 9 खिलाड़ियों को आउट कर 18 अंक लेने में कामयाब रही थी। क्या दूसरी पारी में भी महाराष्ट्र की टीम वो करने में कामयाब रही? ये देखना रोचक होगा वैद्य जी। It's going to be almost impossible task at this stage, it seems, so far as Odisha is concerned, because it is a huge margin. The margin is very huge. At the moment, the score is 16. In the earlier innings, they had scored and there was a difference also. And at the moment, the score is 34 so far as Maharashtra is concerned. And Odisha will definitely try to play for the pride rather. They will play for the pride that how they can do it. But one thing is certain that they, apart from enjoying the festivity and hospitality of Gujarat, all the players must have felt and experienced the exposure at this particular level because national games have become very competitive indeed because the athletes representing at international level, Olympic levels, Paralympics, all are representing their skills and the budding athletes and players will definitely earn from them. It is a big opportunity and big motivational factor so far as budding players and athletes are concerned. And the score is 20. At the moment, the score is 20 and overall the score is 38. So 38 versus 10 at the moment and it will be an Herculean task so far as Odisha is concerned.
लेडी सृष्टि सृष्टि Did you click the pictures? पिक्चर्स लिए थे हम दोनों के ले लेना कमेंट्री करते हुए ना, और सर को भेजना है। ये जब इनिंग शुरू होगा ना तब कर लेना। मुझे एक बॉल दे दीजिए आप। प्रफुल्ल वैद्या आप दिल्ली में पोस्टेड है? हाँ। आइजक सर को जानता हूं। हाँ काम किया है। अभी तो रिटायर हो गए वैसे। आइजक मैं सर बॉम्बे का ही रहने वाला हूँ वैसे। हैं? मैं बॉम्बे का ही रहने वाला हूँ। क्रिकेट का क्या है? मैंने क्रिकेट का डोमेस्टिक ही किया है, इंटरनेशनल और वो सब। बिल्कुल दूसरी पारी का दूसरा राउंड शुरू होने के लिए, और मेरे हिसाब से उड़ीसा की टीम काफी बड़े दबाव में होगी इस मुकाबले में, क्योंकि इस मुकाबले में कमबैक करना लगभग मुश्किल लगता हुआ। 38 अंक है महाराष्ट्र के पास, उड़ीसा के पास दंग, यानी उड़ीसा को 28 या फिर 30 अंक बटोरने होंगे इस मुकाबले में वापसी करने के लिए, और उड़ीसा की टीम बैकफुट पे होगी। उड़ीसा की कोशिश यही होगी कि पहली पारी में उड़ीसा ने 10 अंक बटोरे थे, क्या वो 10 को वो डबल कर सकते हैं, तो मजा आ जाएगा उड़ीसा के कैप्टन और टीम के लिए। लेकिन उड़ीसा ने जो शुरुआत की है, धीमी शुरुआत, परखने की कोशिश महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को, महाराष्ट्र की टीम को, और महाराष्ट्र की टीम पूरी तरह से इस गेम में, इस मैच में पूरी तरह से मैच उनके कंट्रोल में है, और महाराष्ट्र की टीम कोशिश यही कर रही है कि किसी तरह से 9 मिनट पूरे हो सके, और 9 मिनट पूरे होने के बाद महाराष्ट्र की जीत सुनिश्चित कर दे, ताकि महाराष्ट्र 2 जीत के साथ इस ग्रुप में टॉप पर रहेगी। महाराष्ट्र की टीम 2 मुकाबले जीते। पहला मुकाबला उन्होंने गुजरात को हराया था, दूसरे मुकाबले में वो उड़ीसा को हराएंगी, और तीसरे मुकाबले में उनका आखिरी मुकाबला पंजाब के साथ होगा, और पंजाब की महिला को उड़ीसा की महिलाएं पहले हरा चुकी है। तो ऐसे में महाराष्ट्र को एक तरह से महाराष्ट्र के लिए वो मैच प्रैक्टिस मैच के रूप में बदल जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की टीम ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया है, महाराष्ट्र के कोच ने जो फेरबदल किए हैं, वो फेरबदल एक के बाद एक खिलाड़ियों ने मैदान में उसे साबित कर दिया कि वो उस चेंज के लिए पूरी तरह तैयार है, और उसका साफ नतीजा हमें रिजल्ट्स के रूप में देखने को मिलता। महाराष्ट्र की महिलाओं ने अपना पकड़ इस 36वें राष्ट्रीय खेल में मजबूत किया है, और वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि इस नॉकआउट स्टेज में, इस ग्रुप ए से वही टीम रहेगी जो ग्रुप ए से यहां से निकलकर दूसरे यानी नॉकआउट स्टेज या फिर सेमीफाइनल के लाइनअप में पहुंचने में सबसे पहले या फिर प्रबल दावेदारों में से एक महाराष्ट्र की टीम ने अपने फॉर्म और अपने प्रदर्शन से वो कर दिखाया, और उड़ीसा के साथ उनका मुकाबला अभी चलता हुआ। लगभग 3 मिनट का खेल, 2 मिनट का खेल अब तक हम देख चुके हैं, लेकिन अभी उड़ीसा की महिलाएं सिर्फ 2 अंक लेने में कामयाब। और महाराष्ट्र का यही तो प्लस पॉइंट है कि उनके जो पहला जो मैच होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता है, और इसलिए जो चेजर्स जो हैं वो काफ़ी थक चुके होते हैं जब तक दूसरा मैच आता है तब तक। तो
or Priyanka is a role model rather for them, because she is displaying some fantastic tricks of the trade rather, and always conserving the energy. Now she is playing in double chain. Now she is at the pole, but decided to go, not to cross the pole rather, and that is quite advisable so far as the defender is concerned. Normally they avoid it. The score is 4, and still first match, one defender of first match is there, and that is in form of Priyanka, and it is going to be a Herculean task. It's going to be a torrid movement so far as Odisha is concerned, because there is a huge score on the board that they are defending. They must be knowing the fact, and they must have done the SWOT analysis also, that is strength, weakness, opportunities and threats so far as other teams are concerned. But so far as Maharashtra is concerned, they are not required to do that much, because they have been doing it regularly. The score is still 4, and for just 5 minutes left for this. But so now it seems that mere formalities are being completed. And the most important thing so far as the game of KHO is concerned, and particularly in the second inning, it is not a test of your skill. It is not the test of your techniques or tactics. It is the test of your endurance level. How long can you maintain that endurance level? That is very important. And for that to happen, they always try to conserve the energy. And see how she is relaxing, and taking some breather, how she is resting, how she is taking the rest even while running also, how she runs. And I think she has appreciated the gesture, and the score moves to 6. So the first match is back into the sitting duck. बिल्कुल कोशिश यही उड़ीसा के महिलाओं द्वारा कि वो पिछली पारी में 10 अंक बटोरने में कामयाब रही थी, क्या उसे बढ़त पाने में वो कामयाब रहेंगे? 36वें राष्ट्रीय खेल का सीधा प्रसारण आप गुजरात से देख रहे हैं। गुजरात के 6 शहर अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक ये सीधा प्रसारण आप डीडी स्पोर्ट्स पर देख पाएंगे। और महाराष्ट्र और उड़ीसा के बीच 36वें राष्ट्रीय खेल में खो-खो के मैदान से, खो-खो के मैच से आपको ये सीधा प्रसारण हम दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की टीम टॉप फॉर्म में, टॉप गियर में, पहला मुकाबला वो जीतने में कामयाब रही थी गुजरात के खिलाफ। दूसरे मुकाबले में उनका वर्चस्व पूरी तरह से ओडिशा पर हावी। महाराष्ट्र टीम डिफेंडिंग चैंपियंस है, इस खो-खो के प्रतियोगिता का नेशनल चैंपियन है, जो पिछले नेशनल्स 2015 में हुए थे। 7 साल बाद भी महाराष्ट्र में कोई ऐसी शंका नहीं कि महाराष्ट्र टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है कि महाराष्ट्र की टीम एक तरह से एक बार फिर नेशनल चैंपियन बनने के प्रबल दावेदारों में से एक। और महाराष्ट्र की टीम पूरी तरह से उड़ीसा की टीम पर दबाव बनाती हुई, और उड़ीसा की टीम के पास समय ज़्यादा नहीं है, 2 मिनट 45 सेकंड का समय अभी भी घड़ी पर बचा हुआ, और उड़ीसा के पास बहुत बड़ी बाधा है पार करने के लिए। अब भी उड़ीसा की टीम महाराष्ट्र की टीम से 22 अंकों से पीछे है, और सेकंड हाफ में उड़ीसा का स्कोर 8 पॉइंट, महाराष्ट्र का 20 अंक। तो कुल मिलाकर 20 पॉइंट्स की अभी भी 20 पॉइंट से भी अभी भी पीछे है उड़ीसा की टीम। और उड़ीसा की टीम की कोशिश यही होगी कि इसे डबल डिजिट या फिर 14 या 16 पॉइंट पर वो समाप्त कर पाएंगे। ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उड़ीसा की टीम के लिए, वैद्य जी। Now Odisha is definitely playing for the pride, and that's the only thing that we can say so far as the fate of this match is concerned. And now so far as Maharashtra is concerned, they will definitely try to learn something. It's like a practice match for them. It's like a practice match. It has become a practice match. Of course, at the beginning, nobody would have thought like that. And nobody thinks like that also when you are participating in a competition. But at this stage, so far as Maharashtra is concerned, they are treating it like a practice match. And Odisha, definitely hats off to them, hats off to their efforts, but there is a long way to go for them in order to compete at national level in such a big event.
because there are seasoned campaigners in other teams also. They are also doing exceedingly well. Of course, it's good that this event took place even after 7 years also. In the last national games was organized in 2015. That was the 35th national game. But after a gap of 7 years, this tournament is being organized. This event is being organized. Not only organized, but organized in a unique way, in which the Honorable Prime Minister himself saw to it to be there to inaugurate the function and motivate the athletes and the players. What a pride moment! What is the pride moment so far as the athletes of India are concerned? And it was a unique function indeed, and all the players, all the athletes were motivated with that, and they are enjoying it. Not only enjoying it, not enjoying the out of the field, but enjoying on the field also. But at the moment, one more victim has been managed, rather I would like to say, by Odisha, and the score is 10. Of course, it's a Herculean task. It's not going to be easy. The fate is almost decided. But to talk about the fate of the match and the result of the match, it's over to Anil. बिल्कुल 8 सेकंड का खेल बचता हुआ 20-10 महाराष्ट्र 20 महाराष्ट्र कुल मिलाकर 38 अंक महाराष्ट्र के पास, उड़ीसा के पास कमबैक करने का मौका नहीं और ये लॉन्ग हूटर और महाराष्ट्र ये मुकाबला जीता हुआ 38 अंक बनाम 20 और महाराष्ट्र दो मुकाबले जीतकर महाराष्ट्र एक तरह से इस मैच में और इस 36वें राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र ने एक तरह से अपनी जगह नॉकआउट स्टेज में सुनिश्चित कर ली है। महाराष्ट्र ने ये मुकाबला 18 पॉइंट से जीता और महाराष्ट्र की महिलाएं डिफेंडिंग चैंपियंस है और डिफेंडिंग चैंपियंस के अनुकूल प्रदर्शन एक बार फिर खो खो के मैच में हमें महिलाओं से देखने को मिला महाराष्ट्र की।
Khan, Chitra, Vidya, Srital, Nishika, Gauri, Vara, Jyoti, and Maheshwari. और कर्नाटक के साथ टक्कर लेने के लिए जो टीम आ रही है, टीम दिल्ली। लक्ष्मी, रेहाना, शहनाज, सौम्या, परवीन निशा, रेशमा, नसरीन, मधु, ममता, सिमरन, रिया, मधु, सादरा, निष्ठा नवाज एंड माया. Captain, more teams. Captain. Toss won by Delhi and choice defense. So everything is well set for the women's match between Delhi and Kerala. Delhi is defending and Kerala as usual definitely
They will try to garner some points. And they have been able to do it in the first 30 seconds. So the score is 2. That was a parallel running so far as chaser and defender are concerned. And for the first time we have seen that such a long running is being done. Kerala, Delhi number 15 is trying to evade the tap. Oh, that was a foul. That was a foul because the chaser got up before the KHO was given. And as per the rule, giving the KHO and calling has to happen simultaneously. In that case, that did not happen. So one more victim so far as Kerala is concerned. They have succeeded it, and normally we know that in the first match the best defenders of defending side are there on the court, but this time Kerala has managed to got rid of 2 of their best defenders. Is it going to be out? The Keralian defender is claiming, and that is a success so far as Kerala is concerned, and the score moves to 6. Oh, they are clubbed. Unfortunately, 2 defenders from Delhi side, number 3 and number 5, were almost clubbed. Is it a trap by the chaser? It's going to be interesting, because it happens that when you are in a position to club the defenders, you get an opportunity to get rid of one of them at least. But this time they have managed to separate themselves and no damage done. The score is stationary at 6. Just 6.37 seconds left. This is going to be an acid test so far as both the team. All the tricks of the trade are being employed by the seasoned campaigners. Even women KHO players also. The score is 8. So the 4 defenders are back, and one from the second batch but number 3 is still there, and she is playing in single and double chain. Now she is at the pole, but normally they avoid at the pole. Now this time she has been able to evade from that pole, because there was a huge distance between the chaser and the defenders even at the pole, so no damage done, and that could be managed. Kerala chasers are trying their best to garner maximum number of points, but so far they have succeeded in getting 8 points only, and 5 minutes and 30 seconds are left, and the position is 8. This match is being played between Karnataka and Delhi women's team, and this is the last match of this session particularly. Of course there will be evening session as well, and that will be very exciting. In the morning also we saw that some exciting drills from KHO players. So slowly and steadily Kerala chasers are claiming some points. So this time, there is a misunderstanding. And you see, when you take a particular direction, you have to go into that direction only until you go to the pole. Unless you go to the pole, you have to go in that direction only, or you give KHO. If there is a foul, you are instructed to go in a particular direction by the referee, and these match referees are being trained, are being examined and being scrutinized, and after that only they are being appointed. And as per the development of the game, even number of referees are also increased. Just I was talking to one of the veteran referees of KKFI, and I was told that there are as many as 10 of match officials particularly looking to the development of the game, certain changes in the game,
And earlier there used to be 6 officials, but now there are 10. 2 officials or 2 umpires are standing at the pole that you can see, and there are 2 more in the dugout to monitor the things in the dressing room. And as usual, there are 6 other umpires, including referee, umpires, and scorers. And not only that, but when a point is scored, a scorer has to enter at 5 columns. He has to enter in 5 columns, particularly, specifically 5 columns are there. There can be more also in that case, but 5 columns are mandatory. At the moment, the score is just 12, and 3 minutes left. It is a reasonable effort on part of both the teams. So that defender fell down and the score moves to 14. Whenever you listen the whistle, I mean it is a whistle instructing the chaser that you have to amend your fault, and that amendment of fault is directed by the referee only. At the moment the score is 16. Karnataka chasing, Delhi defending. Once again there was a direction foul, and she has to go back to her sitting square. The score is 16 at the moment. The score is 16. Slowly and steadily we are reaching at the fag end of the first turn, which is of 9 minutes, and after the first turn there will be a break of 3 minutes between 2 turns, I mean particularly, and after the first inning is over there will be a gap of 6 minutes. So overall the KHO match turns out to be 48 minutes match in that case. 4 turns of 9 minutes and 12 minutes for break. But anyhow, more about it at later on. The score is 18 at the moment, 1.11 seconds left. Karnataka team has done an exceedingly good job so far, because they have claimed as many as 9 defenders. Because as per the new rules, I mean 2 points are awarded for each defender getting out. Earlier it was 1. So many amendments are made, and won't be surprised some other new comes that we saw in Ultimate KHO. The score is 18. Just we are running at the fag end of the first turn. Just 33 seconds left. The score is 18. Delhi girls are desperately trying to protect, and there are some anxious faces about the outcome and the performance. But this Delhi girl number 7, there are so the score is 18 and the whistle blows. So that's the end of 9 minutes first turn, and Karnataka the score is 18. Welcome to the 36th National Games, bringing unity with sports, so come on then. Let the forces collide like Triveni Sangam. It is time we must shine, go beyond, man. साबरमती से साहस ले, लोह पुरुष से हिम्मत ले, तू किस्मत का रुख मोड़ेगा, देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा, देश की
Welcome to the 36th National Games, bringing unity with sports. So come on then, let the forces collide like Triveni Sangam. It is time we must shine, go beyond, man. Put the best foot forward, bring your A game. Show the disbelieving haters you're a champion. Gotta do it for yourself, gotta do it for your fam, gotta do it for your nation, gotta do it cause you can. Come on. रोका कितनों ने तू रुका नहीं टोका कितनों ने तू झुका नहीं तू क्या है उनको पता नहीं कश्कलन सा विशाल तू रानी की वासी तू गहरी रात भर ना सोया तू दिल शाम क्या क्या दोपहरी तूफान को पिया तूने एक घूंट में One shot down, दर्द को दिया तूने चोट चोट में no, we don't back down. पंशेर तू तो हारेगा तू खुद से आगे दौड़ेगा That's right, that's right. दौड़ेगा देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा. देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा. United we walk, in unison we talk. There's beauty everywhere, don't you see that? We don't ever stop, we fly as a flock. There's nobody better, you can feel that. जुड़ेगा India, जीतेगा India. We're working our way to the top, yo. जुड़ेगा India, जीतेगा India. Don't believe it, just watch. So the first turn of tally chasing has started, and on your screen is number 2, number 3 from Karnataka, that is Tejaswini and Veena. At the moment they are, number 2 is being chased, Tejaswini is being chased, and definitely they'll try to garner some more points, particularly. So Delhi girls are claiming and not succeeding. It seems that they are under pressure. That was a valiant effort made, but unfortunately it was in vain. And so the score is stationary, it is 2 points. They have been able to garner 2 points. Chaitra is being attacked. For the first time we have seen that the chaser has run a long way. Normally they prefer to give course. Chaitra is displaying some quality KHO, and she must have been taught by the coaches and must have been given some tips as well. And so far as this match is concerned, I mean, it's good that not so many fouls are created.
this time, yes, that's it. That's it. Oh, that was a valiant effort. Did she touch the central lane? It is interesting to see. Delhi girls are finding it extremely difficult. There is tremendous excitement prevailing off the field rather than on the field. But at the moment, she is at the pole. Will she survive? Yes, she easily survived. No damage done. Veena has done an exceedingly good job, and the defender is as usual claiming the point. These are perhaps the best moments so far as the game is concerned. Number 3, Veena is displaying some exemplary KHO. And see, oh my God, this time she was trapped. Very intelligent move by the chaser. She was trapped in front of her, and so that's the one more victim, and the score moves to 6 so far as Delhi is concerned. But there is a long way to go. Of course, there are 5 minutes left. It will be interesting to see what they can do. Hats off to endurance level of this girl. Oh, this time there was an attempt, and on your screen is the coach Ashwini Kumar, who is very dedicated, passionate and committed, and that is a healthy sign so far as KHO is concerned, because it has become professional and there are so many Indian coaches. Not only that, but Indian coaches goes abroad also for motivating KHO. Even some of the coaches have also gone to Korea, Pakistan, Bangladesh and other countries. And in England also KHO is developing like anything. Even in South Africa also KHO is developing. But at the moment the score is 8. Number 10 is being attacked, and more excitement is prevailing off the field rather than on the field. And why not? Why not? This is a game of excitement. It provides entertainment, it provides excitement, it provides aesthetic pleasure as well. So, one thing is certain, that all the teams are having different tactics, and they are converting the situation according to their requirement, and that speaks about the tactics. See, as I was talking, here is Ashwini Kumar, the coach. When I was talking to him in the morning, he told me that I just advise my players to follow the basics. That's all. You follow the basics and every other thing will follow. The score moves to 10, but they are running short of time as well. Just 2.7 minutes left. And there will be definitely some nervous moments so far as both the teams are concerned, because definitely Karnataka will try to see that they don't give any lead.
while Delhi will try to garner at least marginal lead, but that's going to be a tough job. That's going to be very difficult. On your screen are some of the players and the spectators as well. Spectators come players, I mean. See how she is changing the lane. The score is still 10. And now it seems that Delhi chasers are getting a bit exhausted or rather tired. The score moves to 12. One more trap. Yes, that's it. That's it. Number 5 is back. Number 5 is back. And one thing that we have observed during this particular match is, and normally all the matches, the play goes around the central lane. They are not going far off it. And that happens only because they have to change the lane. Single chain, double chain and what not. Round game is rarely seen. You see the excitement. So far as the coaches are concerned, so far as the players are concerned, everybody is excited because this game is of that much excitement, because you have to play for 540 seconds per turn, I mean. Oh my God, that's one more point. It seems that they have succeeded in doing it. Yes, that's it. The score moves to 14 and now that's all. 18-14 is the position. 18-14. Some of the highlights on your screen. See how valiant efforts are being made by these girls from both the teams. And how confident they are when they are claiming the point. And why not? That adds to the confidence level of the team, as well as personal confidence as well. This is how number 15 was tapped. Number 5, sorry. It's number 5, not 15. There was some misjudgment on part of the defender.
Hello. Here is the halftime score match between Karnataka versus Delhi in women's session team played on ground. Karnataka score 18 points, Delhi 14. On Karnataka side number 3, Veena M played 1 minute 40 seconds. Number 10, Sheetal RP played 1 minute 50 seconds. Number 15, Maheshwari played 1 minute 20 seconds and scored 4 points. Delhi side number 7, Nasreen played 1 minute 40 seconds and scored 4 points. Number 10, Simran played 1 minute 30 seconds and scored 2 points. In halftime, Karnataka 18, Delhi 14. Karnataka lead by 4 points. So the play is about to begin. Karnataka to chase with the lead of 4 points, and on your screen are Delhi defenders. Number 15, but at the moment number 7 is being attacked. So Karnataka is definitely having an edge so far as points tally is concerned at the moment. So that's a long chase, and this time Delhi defenders will definitely try to see to it that they survive for at least 2-3 minutes. The first match, I mean. Will they be able to do it? See how she is being... Delhi girls are also very professional. They are being trained. And during the last national games also, they performed well. But every day is a new day. Every game is a new game. Every year is a new year. But so far they have succeeded in protecting themselves. So in a way this is going to be an interesting match indeed. Karnataka chasers will have to find out some clues to get rid of this first match. Of course, they must have been taught the tricks of the trade, but implementation is more important.
Almost 2 minutes are over and still Karnataka hasn't been able to do something extraordinary. Delhi girls have done an exceedingly good job at the moment. Oh my God, that was a valiant effort of dive, pole dive rather. But normally defenders try to see to it that they keep enough distance at the pole particularly. Normally they avoid going at the pole, but whenever they go, they try to see that these times he has been trapped, and so that's number 15. It is number 15. Karnataka has managed to score 4. So their overall score is 22 to 14. So that was a foul, because when at the pole you try to create maximum advantage, and if you cross the central lane, then that's a foul. You can't afford to do that. Slowly and steadily Karnataka team is consolidating their position. At the moment the score is 6. First batch of Delhi is back in the dugout. But this girl wearing t-shirt number 5 is giving some anxious moments. But there was a long run. And no. See the attempt. See, this is the knowledge. This is an expertise that shows that this girl knows fully well that when the chaser has taken a particular direction, he or she cannot go beyond that, and that particular lane is shoulder line rather than that of head. So shoulder line is important particularly, and this is going to be very vital, and it seems that number 5 is exhausted. Yes, and this is the result. This is the result of exhaustion. When you are tired, you cannot give your best. And particularly this happens in the second innings. And as we have been telling you right from the beginning, the second inning is not a test of skill or tactics or technique. It is a test of your endurance level. How fit you are, how much energy you have conserved, and that is your test. Anyhow, at the moment the score is 8. And Karnataka's overall score is 26 to 14. For a change, it seems that these girls won't mind going beyond near the sideline as well. And at times they slow down the game. The pace of the game is slowed down, particularly by defenders. So all the tricks of the trade are employed. There hasn't been much excitement. Oh, no, that's it. That was an easy prey. And maybe the result of exhaustion. Maybe she must be tired. The score is 10 because this is the third turn.
Oh, she has fallen. Hope that no injury has taken place. At times we see that the chaser go in the straight line at the cross lane and then take the direction. And in order to prevent that foul, they try to tap while being in the cross lane. Because if they change the direction, then that's a foul. So at the moment the score is 12. And overall score is 30 versus 14. So it will be a huge task so far as Delhi is concerned when they chase 1 minute and 4 seconds are left. Chasers always think that they have tapped, and defenders always think that no, I have survived. But there are judges, there are referees, there are umpires to have an eagle's eye and decide about the fate of that particular event, whether the defender is out or not, whether the chaser has chased properly according to the laws of the game or not. The score moves to 14. This time she has been able to do it. Because particularly in this area, that is a free zone, there are no restrictions either for the defender or for the chaser. Now free zone area is measuring to 1.5 meters into 16 meters. So at the end of the turn, the score is 16 and overall lead of Maharashtra is 34 to 14.
हरियाणा टीम कोच एंड मैनेजर जल्दी से जल्दी माइक के पास आने का कष्ट करें। हरियाणा टीम कोच एंड मैनेजर। हरियाणा टीम कोच एंड मैनेजर, आप कहीं भी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जल्दी से जल्दी ऑफिशियल टेबल के पास आने का कष्ट करें। हरियाणा टीम कोच एंड मैनेजर। वुमेन्स टीम, हरियाणा की वुमेन टीम्स की कोच या मैनेजर जो भी यहां पर उपस्थित हों, प्लीज जल्दी से जल्दी ऑफिशियल टेबल के पास आने का कष्ट करें। इधर आइएगा प्लीज। आ गए सर। हमारे प्रेसिडेंट साहब खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के हमारे आदरणीय श्री सुधांशु मित्तल जी, आप देखिएगा सिर्फ हमारे जैसे लुक में आज। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां जरा। आप पर वैसे हर कलर खिलता है और ये तो चार चांद लगा रहा है सर। थैंक यू वेरी मच। So the play has begun. This is the last turn of this match, that is Karnataka versus Delhi. Delhi is chasing and Karnataka defending. The position is Karnataka 34, Delhi 14. The first match is there. It's going to be a Herculean task so far as Delhi is concerned. Chaitra of Karnataka is being chased. So that's a foul, it seems. .41, 7 minutes and 41 seconds left. There is a long way to go so far as Delhi is concerned, because at the moment the score is 34-14. So the target would be 22. Delhi has managed to procure 2 points. So far as Karnataka is concerned, they can slow down the game because they have nothing to lose. Very quiet KHO is being displayed. Some anxious moments in the spectators gallery as well.
But these Delhi girls seem to be a bit younger than Karnataka girls, maybe because of their physique. All said and done, Delhi is finding it extremely difficult because both these defenders are running in chain, and particularly number 2, that is Tejaswini. See how she is changing the ring chain, single chain, double chain, all the tricks of the trade and the tactics are being used. But now Delhi chasers are becoming a bit desperate because they are not succeeding in doing it, and out of that desperation, frustration may erupt. So that may not be helpful to them. But Karnataka has shown their supremacy throughout. That was an attempt but didn't succeed. This is the 4th match of day 2. And then there will be a break, and in the afternoon there will be 4 more matches. This is the second day of this KHO event being organized at Sanskar Dham Sports Complex in Ahmedabad, and which is being brought to you live by Doordarshan. Ultimately, they have been managed to score 2 more points, and the score reads 4. But that won't help. That won't be sufficient rather, because there is a long way to go and they are running short of time. At the moment, the time left is 3 minutes and 50 seconds. As you know, this is 9 minutes turn. There are 4 turns of 9 minutes. And there are 2 innings. The lead of the first inning is carried over. There are certain rules regarding follow-on also. Of course, as per the basic rules of KKFI, the optional follow-on was 6, 7 to 8 points. But if it is more than 9, it was mandatory, but now that is being changed, and now the optional limit has gone to 12 and mandatory has gone to 16. In order to make the game interesting, innovative ideas are being implemented, and that we saw in Ultimate KHO also. But at the moment, 2 more points are scored. That was a valiant effort and success did. She has succeeded. Whatever may be the result of the game, but Delhi girls have tried their best and proved their commitment. But Karnataka seems to have an edge right from the beginning itself, that we saw in the first innings itself rather. So now Ashwini Kumar, the coach, is enjoying the game, and so is the case with so many coaches, officials, spectators, viewers. Now just less than 2 minutes left, and there's a long way to go. The score is just 10. Karnataka girls are definitely trying to force them to toil and moil, and so far they have succeeded in doing it, because they have considered just 10 points and just 1 minute and 20 seconds left. So they have done a very good job. So that was very crucial
or rather very interesting indeed. The score moves to 12. Less than 1 minute left in this turn, and the fate is almost decided that Karnataka will win this match. But hats off to Delhi for their extraordinary efforts put in by them. Number 6 is being chased, and my God, there was a foul. Direction foul is very common, particularly in the game of KHO. Just 22 seconds left. And just 9 seconds left. That's going to be very, very interesting. Will they be able to garner at least one claim, or 2 points rather? No, that's all. So the score is 14. And Karnataka has won this match. We are waiting for the official results. सभी टीमें ध्यान दें प्लीज. सभी खिलाड़ी ध्यान रखें. जब भी आप मैच खेलने आएंगे तो आप सभी अपने साथ अपना मेंबरशिप कार्ड लेकर के आएंगे. So Karnataka has won this match by 6 points. Joseph.